you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Due to some technical errors, ma'am. Yes. The Padma meeting ma'am, was please ended. allow me to share the PPT. Yes, ma'am. Please. Padma ma'am, is there any problem? Yes, ma'am. I can't share the PPT. Can you please allow me? Okay. Just a minute, ma'am. So let's begin. Okay, now I can. File, madam. Yes, so I was on a point that there are so many legal, social, and ethical controversies surrounding surrogacy, but we will not indulge ourselves into discussing all those issues for the simple reason that today we need to accept this technology. Society is evolving, and we need to accept the change, and rather I may put it like this, that now technology is available to us. Technology is trying to help us to be a biological parents, even if I do not want to enter into heterosexual conduct, or if I have some fertility issues, then I can be still I can be a mother. Then why not to adopt this kind of technology? Now see, uh, this is more because of the infertility problem which we are facing today. Now if we look at the WHO, WHO estimates that approximately 16.8%, 16.8% is an infertile rate. What does it indicate? That every 2 in 10 women, okay, they are suffering through infertility. And you must be aware of that recently WHO has recognized this as a disease. This is considered as a disease now. So approximately 28 million infertile couples are in India. Now, if we look at this alarming rate, we may realize the importance of the technology in today's era. Okay, and therefore we will not be discussing about the ethical and other issues, but definitely this is a time where we must accept this kind of technology as with all rational approach. Now then the question might come that whether then what is the extent up to which we may regularize these practices? Does it mean there shall be a complete intervention by the law, so that all the technology need to be regulated at the whim and caprice of the government, or it shall be wisely regulated so that we can have a balance between protecting the rights of those who are involved into the surrogacy practices, as well which can have a check and control over the practices followed in India. Now, see why I am saying so, because of the past experiences. If we look at the past experiences, we will realize that these practices are being misused to a great extent. You can have your attention to the present slide. Now see, this clearly says that this is a mother who have delivered a child at the age of 70. Now see, this, and because as she could not tolerate the whole process,
she was actually ill, and she was unable to even raise and take care of her own child. This is another example where a 66-year-old woman has given a birth to a triplet. Now we can understand that with what, matlab, I really do not understand the wisdom on the part of the doctors to allow to go through the surrogacy or through ART practices, allow these kind of practices to the woman at this particular age. But I do definitely understand the mental trauma through which these women must have gone through because of the patriarchal notion. They must have been so pressurized by the society and the social acceptance of their into the society that they were left with no other option than to opt for these kind of techniques to be a mother at the age of 70 or 60. This kind of society is prevalent in India. Now many were not even aware about the impact of the ART or surrogacy on the children. As I said, human form are the subject matter of the technology, and that is why this is more sensitive issue. Now see, byproduct, that is child born out of ART, may suffer from variety of diseases. Especially they may be abnormal, because we all know embryos are generally formed in a petri dish, in a laboratory, and therefore a lot of handling is there, and because of that there might be some abnormality, and the child may born abnormal. Now see, these most of the women, the surrogate mother as well as intending parents, are not aware about these kind of possibilities. And this had happened in our India, that a Japanese couple refused to take a child to its country because they found the child is abnormal and they were not ready to accept. In another case, another couple from the German, no, another couple from the Australia, they refused to take one child along with them, and they accepted another. The twins were born, so they accepted the one who was physically and mentally fit, and refused to take the child who was mentally unfit. Now, these kind of practices really compel us that we must think about having a good piece of legislation to regulate these kind of practices. Apart from these, there are various issues which were brought even before the court of law during that time. And the famous amongst them were Baby Manji Yamada's case and Jan Bala's. I don't know whether you are aware about these cases or not, but let me briefly introduce with the facts of these cases to you. What happened in Baby Yamada's case? A Japanese couple wanted to have a surrogate child through Indian surrogate mother, and therefore they landed in India and entered into a surrogacy contract. Now, in between that period, some tensions arose between the parents and they got separated. Unfortunately, they got separated. And on the top of it, now woman, that is intending mother, was no more interested in getting the child. But father was very much interested in the child, and he wanted to have the custody of the child. But unfortunately, as we all are aware, according to the adoption laws, that was a girl child. So according to the adoption law, a girl child cannot be adopted by a father or a male partner. Then he actually brings his his mother. So grandmother came into picture. She wanted to have the custody, but then issue in regarding citizenship arose, because the passport authority refused to give passport to the baby, and there were so many hurdles which came into existence. Even the same thing happened in Jan Bala's case. In Jan Bala's case, Germany couple wanted to have the child through surrogacy contract in India. They hired a surrogate mother for that, and everything went well. But as you must be aware of that, surrogacy is illegal in Germany, and therefore they also caught up in many legal complications because of this. Because
Initially they wanted that name of the surrogate mother shall be entered into the birth certificate, so that Indian citizenship at least can be granted to the child. But that was refused, and because surrogate mother cannot be considered, and her name cannot be entered into a birth certificate, so only father's name was entered into the certificate. So obviously, again, in this case, the question arose in regard to citizenship and transfer of the child from India to their own country. Now, see, because of these issues, and what happened lastly in both the cases, government of India had to come forward with some kind of compromise that was, we may say, a temporary kind of provision done only for in respect of these cases. So in baby Manji Yamada's case, government arranged exit documents so that the baby can be transferred, but it took 4 years, no, 2 years, 2 to 3 years. In Jan Bala's case, then there was a compromise in the sense the National Commission for Child Rights came into picture, along with the CARA, that is Center for Central Adoption Agency, Resource Agency, that came into picture, and with the assistance of theirs, they could actually get again exit entry of these children to their own country, and then they managed, the adoption procedure was done, and this is how the children were accepted in their country. But see, this took so many years, and we can understand the trauma, agony through which these intended parents must have gone through, and the kind of pressing questions which arose during this period. There are other cases as well which talks about maternity leave and all. The time doesn't permit us to go through all these cases, but I just wanted to convey you the kind of history we have faced, and because of which it was really really required that we should have a piece of legislation regulating these kind of practices. And this is really a welcoming step that today we have twin legislations regulating the practices of surrogacy, the Surrogacy Act 2021 and Artificial Reproductive Technology Regulation Act 2021, which came into force in January 2022. Now, if we talk about this legislation, especially ART talks about the ART clinics, banks, and techniques. And Surrogacy Act talks about surrogacy practice and surrogacy process which are involved into a surrogacy. Now, if we talk about these twin legislations, then you may realize that this was really a welcoming step because of the history that women were being exploited in our country. There were commodification, commercialization, and the incidences which we have learned just now. So through all these experiences, we have learned that we were rather very desperate to have a law. But unfortunately, when law came into force, we realized that this is a faulty legislation to a great extent. Though I do not mean to say that the whole piece of legislation is hopeless or wrong. Definitely we do have a good provisions under the law, and it tried to protect the rights of surrogate mothers and also all other members who are the part and parcel of this process. But these pieces of legislation, especially a Surrogacy Act 2021, is being criticized to a great extent, especially because of its exclusionary in nature. It has excluded many members from within its purview. It also, the question was raised in regarding scientific viability of the legislation. The question was raised in regard to the age limits which were prescribed. So there are rather many issues which are a matter of concern in regard to these pieces of legislation. First, we will try to understand the main provisions under these acts.
And rather we will try to simultaneously understand the provisions of the act, as well as what are the what is the workability, and what are the kind of criticisms, or what are the questions which are troubling to us in regard to these provisions. This will be a time saving exercise. So we will simultaneously, because unless and until we understand the law, we won't be in a position to appreciate what are the drawbacks into the law. So simultaneously we will try to understand. Now, one of the important provision under the Surrogacy Act says that this is allowed, matlab surrogacy practices can be opted by Indian married couple, women, and women they are specifically saying widow and divorcee. Okay. Now, this clearly indicates that they have excluded many other, we may say, competent persons from the process. They have not included homosexual couples. They have not included living couples who are living in living relationships. They have not covered single unmarried woman. They have not covered man. Okay, here at least they have covered women who are divorcee and who are widow, but they have not covered the men who may be divorcee or a widower. They have not included those men as well within its compass. Now, this definitely talks about a exclusionary kind of treatment given to these persons, and therefore many issues were raised into this regard. To just analyze this situation, first we will try to ask ourselves one question in regard to procreative liberty, whether individuals' right to privacy, that is to procreate children and or surrogacy, extends to others, that is homosexuals and single persons, and is it protected by the constitutional scheme? Because we all know that unless and until it has been protected by the constitutional scheme, it would be wrong to argue that these kind of process shall be made available to the homosexuals and other kind of couples as well. So first we will try to analyze this question. Now, if we go through the judgments which were delivered in the past by the honorable courts in India, especially B.K. Parthswarthi versus Government of AP, Javed versus Haryana, Suchita Srivastava and another versus Chandigarh administration, where even reproductive autonomy of a mentally retarded woman was being protected. Now, look, if we look at these judgments, we will found that it has been clearly settled down in the Indian context that we do recognize procreative liberty as a fundamental right under the Constitution of India. If we look at the overseas, then also we may find some significant judgments where we could see that how procreative right has been protected by the judiciary. Now we may talk about array matter of baby M, where the court have gave a certain its approval to the current reproductive procedure. It says, I quote, the right to reprocreate is very simply the right to have natural children, whether through sexual intercourse or artificial insemination. It is no more than that. Now, this clearly indicates that reproductive rights are being protected, and I have a reproductive right not only to conceive naturally, but even if I can't conceive naturally, or even if I can, but if technology is available, I should have an access to the available technology. Now, there are other good judgments as well, which you can see on the slide. That is Instead versus Baird, Griswold versus Connecticut. There are many judgments. Now, here, if we talk about all these judgments, then, various aspects of the reproductive process reveals a common premise in all these judgments, that decision about procreation are protected by the individual's constitutional right to privacy.
So this is in regard to, constitute from the constitutional perspective, we looked to the procreative liberty, but otherwise also nobody will disagree on this with me here when I say that look, this is a very natural desire of a human being to have a child. One may argue here, then we do have other options available, like we can go for adoptions and all. Yes, we do have those options, but still, isn't it a very natural instinct of a human being to want to have a biological or a genetically related child? So if reproductive technology makes it possible even for an unmarried person to have his or her own child, it is discriminatory and socially unwise to deny that person the right to procreate simply because he do not want to enter into a so-called bracket which is set by the society for him, that you must enter into a heterosexual conduct, that too you must first enter into a marriage and then only you can have children. If I see, sometime it may be a very rational argument if I say I may want to be a mother, but I don't want to be a wife. Likewise, a man may say, I may want to be a father, but I may not want to be a husband of someone. See, what's wrong into it? We must respect the choices of the individual, especially when we are talking about, homosexuality. We are rather decriminalizing the homosexuality. We are decriminalizing the adultery into the society. We are allowing living relationships. We are talking, we are open about, actually discussing the issues in regard to same-sex marriages. At this era, you are denying rights to someone because they do not want to follow the norms set for them by the society. This is something utterly wrong, I think. Here, I would take to you to the recent, petition which is filed before the Honorable Supreme Court, that is Arun Muthuvel versus Union of India. You all must be aware of this petition is pending before the court of law, and this has been filed by a renowned infertility specialist from Chennai. Now, if at all you are following the this particular petition, you must have realized that we could see some positive signs from the discussions which are going on into the court. But definitely, we can't predict what will happen. We just can't predict the judgment, and we should not. But what I mean to say, I would just like to bring to your notice one important, argument which was made into the petition, and to which I completely agree, and therefore I just want to share that argument with you. It says, I quote, the impugned acts through their discriminatory, exclusionary, and arbitrary nature deny agency of autonomy in the discourse on reproductive rights and provide a state sanctioned notion of the ideal family that restricts reproductive rights. I unquote. I hope you also will agree with the kind of argument which was being forwarded. Now, here again, I would like to refer to the recent judgment by the Honorable Supreme Court in Deepika Singh versus Central Administration Tribunal, where from where I have actually quoted one para. I will read it for better understanding. I quote, atypical families which are different from traditional family units are entitled to equal protection of law. Familiar relations may take from form of domestic, unmarried partnership or pure relationships. A household may be a single parent household for any number of reasons, including the death of a spouse, separation, or divorce. These manifestations of love and of family may not be typical, but they are as real as their traditional counterparts. Such atypical manifestations of the family unit are equally deserving not only of protection under law but also of the benefits available under social welfare legislation. I unquote. Now, this is a clear cut indication, or a clear cut, we may say,
clear-cut statement by the court of law that we should not confine ourselves into a, or we should not be very particular in demanding that what kind of families could raise the children, what kind of families cannot raise the children, because they are not traditional kind of families. They are unable to raise, they emotionally they may not be in a position. Look at the couples who may be unfortunate to be a divorcee or to be a widow or a widower. Now these parents are also raising their children. Now, by questioning the capability of theirs to raise the children is something utterly wrong. So we should not indulge ourselves into that. I would also like to bring your focus to the recent petition, which is again pending before the court of law, before the Honorable Supreme Court, that is marriage equality petition. We all are aware of that same-sex marriage, legalization of same-sex marriages is being claimed before the court of law, and the hearing is on. Now, see, during the course, this is a very, very important observation, and therefore I felt like sharing this with you, because here, when the arguments were raised before the court of law, during that hearing, during the course of hearing, one query was raised by the court. It says that uh, query was raised if certain executive instructions could be issued to ensure that same-sex couples have access to welfare measures and social security, such as permission to open joint bank accounts, to name partner as nominee in life insurance policy, PF pensions, etc. It further says that whether a declaration of right to marry for same-sex couples could be issued without interfering with the existing statutes. I unquote. Now look, these are the queries raised by the Honorable Supreme Court, but it talks about the curiosity or inquisitiveness on the part of the Honorable Court to know the possibility if we could, regularize or legalize the same-sex marriages, and could allow persons to be entitled for all the benefits which are otherwise available to the normal couples. Now all these provisions clearly talks about our positive attitude towards respecting the rights of a person irrespective of their sexual preferences, or sexual their marital status, in the sense whether they are single or married couple. So on the basis of this, I would like to share my opinion with you that this is a high time where we should actually include within the definition of intending parents, we should include homosexual couples, same-sex marriages couple, as well as couples who are living who are into a living relationship, unmarried woman, as well as unmarried men. We shall include all those things. Coming to this now, see, there are other different provisions, other significant provisions under the Surrogacy Act, which are also under challenge. One of the provision is in regard to altruistic surrogacy. Now we all are aware of the fact that present statute talks about altruistic surrogacy. Rather, it says that only altruistic surrogacy is permissible, and they have completely banned commercial surrogacy. I do not want to say that why they have banned commercial surrogacy. Rather, this was the requirement. With this aim only, rather, we have started the whole exercise of enacting the law. So this is really a very noble, we may say, provision by completely prohibiting the commercial surrogacy. But I am on altruistic surrogacy. Now here, for just reference, I would like to read the definition given under the Act. It says that altruistic surrogacy means the surrogacy in which no charges, expenses, fees, remuneration, or monetary incentives
of whatever nature, except the medical expenses and such other prescribed expenses incurred on surrogate mother, and the insurance coverage for the surrogate mother are given to the surrogate mother or her dependents or her representative. It clearly states that, altruistic surrogacy will be without any compensation except for medical expenses and insurance coverage, which it says for 36 months after the delivery, the woman, the surrogate woman shall be covered under the insurance, so that if at all post delivery, if any complications arose, she could get a claim through insurance policy. Okay, so except medical expenses and the insurance, she is not entitled. But if at all you have listened to me carefully, you must have observed one thing. It says other prescribed expenses. She is entitled for other prescribed expenses. Now, here there is a lot of scope for interpretation, but unfortunately, they have not defined what do they mean by prescribed, expenses under the law. It has not been defined. Now, if we look at the laws which are prevalent in other countries, especially I have gone through the laws of Australia, USA, UK, Ukraine. Now, there I realized that they have the provision whereby the woman can be compensated for some other expenses, like if, say for example, if the surrogate mother is working and there is a loss of earning because of XYZ reason, so she will be compensated for that. Definitely she will require some not medication, she will require some special food, she will require some special clothing because of the physical changes, she may need rent because she may have to change her place of residence because of some reason, she may need transportation charges. Look, all these charges have not been covered under the act, because this will not be covered under the medical expenses, obviously. So these are the expenses which really need to make, but unfortunately this was not talked about in our law. Now, there, as I said earlier, there is a scope that judiciary may interpret like this, but if at all we interpret like this, then this means we are accepting compensative surrogacy model, because this is exactly a compensative surrogacy model. So if we are open to accept this, why not to mention this with all clarity into the act, or at least into the rules? But unfortunately, this has not been mentioned anywhere under the act. Another point which we should ponder upon in regard to altruistic surrogacy is, now look, isn't it a too high, we may say, ideal to be achieved? Because look, who will be accepting to be a surrogate mother for someone even without accepting, without expecting compensation to be paid to her? It's really difficult. Even I would say, to the extent a sensitive couple will definitely not want to take surrogacy services from any woman unless and until he pays some respectable amount as a compensatory amount to her. Because look, she is carrying the baby for 9 months in her womb, she is actually nurturing the fetus into her womb, she is going through a lot of changes, hormonal changes, mood elevation, mood changes. Now see, there are so many changes which are happening, and therefore she actually may be suffering, or it is a very natural expectation, if at all she expects, that some adequate compensation need to be paid to her. But unfortunately that is not being talked about under the present act. Now, even if we go ahead and say that, okay, a sister or sister-in-law may accept and maybe a altruistic, maybe surrogate mother for the intending parents. But look here,
What could be the possibilities, especially in an Indian society? Here again, I know for sure that you will agree with me. There are good chances of exploitation of women into all this process. Because look, now this the young women in from the family will be forced to act as a surrogate mother for the other, because we all know that being a parent is a very very important issue. Rather, it is said that child constructs the parent socially, okay, and therefore for their social acceptance they may force the other women from the family itself to be a surrogate mother even without their wish or without their willingness. Now tell me, is it not exploitation? Rather, I will say this will be a bigger form of exploitation, because even if I do not want, I may have to go through, and that too, I will not be compensated for my services. Now, see, again, another question which we must introspect in regard to altruistic surrogacy is, does surrogacy law impinge surrogacy mothers' rights, in the sense that uh, they are not giving compensation where I have a right to get some amount of monetary compensation for the services I am giving to the society. And therefore, I feel that compensation should be given. See, a compensation is not an antithesis to altruism, right? And therefore, why not to pay adequate compensation to the woman? I may say that government may prescribe some limit. Okay, it must not be too exorbitant so that it can be termed as a commercial surrogacy. Definitely we do not want that. It should not be exorbitant, but that should be enough, or that should be adequately compensating the surrogate mother for the expenses she is incurring or the trauma through which she is going through during the period of surrogacy. I would here like to bring attention of yours to one another important factor. See, before the enactment, the report was submitted by the Law Commission for legalization of surrogacy and ART practices. That is 226, 228. 228th report of Law Commission of India. Now, if you go through this is a very bulky report, but if you go through cursory look of the report, it is very evident, it is very clear from the report that it talks about the reimbursement. They have used the word reimbursement. Now, what does it mean? Again, it is suggesting a kind of compensating or compensating surrogacy model, but unfortunately this has not been clearly followed while framing the law. Another important aspect to which I want to bring your attention is in regard to surrogacy, definition of surrogacy mother. Now see, there is an ambiguity into the definition, and there were a lot of confusion, because most primary reading of the definition indicates that surrogacy mother shall be a relative of the intending parents. Now, as I said earlier, this is a too high an expectation to be fulfilled, or this is a this is something which a person may not do willingly. Now, here, this was realized with the passage of time, and now the clarification recently in the last month, there is a clarification from the government of India, and they have stated that surrogacy mother need not to be a relative of the intending mother, but any willing woman. Okay, willing woman, because if you read the whole act, then the provision for willing woman has also been prescribed. So they have stated that willing woman also can act as a surrogate, provided she was brought before the appropriate authority and she gives a consent in front of the authority to be a surrogate mother. So now this is resolved, but still I have a question on this. Now, see, though you are talking about surrogate mother need not to be a relative of yours, but see, ultimately, who else it is going to be? Either inevitably, it is either
some relative, or maybe domestic help, right? And therefore it is really difficult to strongly believe on this, that a woman with a woman who is not relative or who is not known to me will be accepting to be a surrogate mother for me, delivering baby to me without any hope for any compensation from the intending father. It is really a very wrong expectation from the mother. Another important point which I want to bring to your notice is in regard to age factor. See, the age bracket is being prescribed under the act. Intending women need to be between the age of 35 to 45 years. So no, yes, 35 to 45 years. And if intending couple and they are married, they in the age group of 23 to 50 years in case of female, and 26 to 55 years in case of male. Okay, now see, this is the age bracket. Now see here, we can definitely argue, not for the sake of argument, but substantially it is true that this is a time where generally women and men as well, they want to focus more on their settling down into their professional life, or into their business, whatever it could be, but they want to settle down and then want to enter into a marriage. So generally late marriages is a very common rule of these days. Now therefore, if say for example, if a woman marries or a man marries at the age of 35 to 40, and they tried and they attempted to have a biological child, but they could not. Now they will not have the remedy beyond the age prescribed for that, prescribed into the age bracket. So this is wrong, because see, as long as the sperms of the man is healthy or fertile, as long as the eggs of the woman are fertile, what's wrong to allow them to have a pregnancy? Again, we can talk about, or we can just imagine some hypothetical situations where, say for example, we will take a hypothetical situation that at the age of 50, unfortunately the couple lost their son. Okay, and that was the only son, and they lost the son because of unfortunate accident. Now say if the woman is going through depression and she is suffering and she is very desperate to have the child. Now see, all the doors will be closed for her, because she will not be even in a position to go for the surrogacy, because she does not actually fits into the age bracket which has been prescribed under the law, that is up to 50 years of age. So she will not be in a position to have the child. See, in past there were many cases where these kind of incidences had happened, and they could get the child through surrogacy. But now this seems difficult because of this kind of provisions. Another important point which we must talk about is a kind of certification required under the act. Now look here, I have talked about the 4 layers of certification. Apart from that, 2 certificates from other doctors. Now here the law requires a certificate of essentiality to be the appropriate authority, a certificate of medical indication issued by the district medical board, a eligibility certificate. This is required for the surrogate mother as well as intending parents from the appropriate authority. Okay. Another order concerning the parentage and custody through the intervention of the court from the magistrate, first class magistrate. Then a certificate of physical and psychological fitness registered from the registered medical practitioner, a certificate of medical reasons why you are opting for surrogacy practices from the IVF specialist. Now look at these formalities or the procedure, a cumbersome procedure through which one have to go through. Now what does it mean? Even if I'm eligible to be a parent,
and I can opt for the surrogacy process because I do not fall within all the hurdles created by the law. So I am eligible according to the present law. Still, look at the kind of trauma and the exercise I may have to do for getting, approval from the government to get or to opt for the surrogacy. Now, isn't it a harassment? Because look, I am the person who is desperate to have the child. Obviously, this means I must have tried my best to be a biological parent, but I must have failed. I must have opted for other ART techniques. Okay, must means I may have gone through lots of medical inclusions. I am now ready to pay huge amount from my own pocket, and still I will have to go through this cumbersome process. So look at the cost, look at the trauma, look at the time consuming process this is, look at the time which it will take to process something like this. So this is we have to think, is it really worth? Another important point which I want to talk about is appropriate authority, but that we will talk about at appropriate time. Now we will talk about other significant provisions in regard to protecting the rights of women. As I say, undoubtedly, this is something. This law is something which was required, and this is really serving a noble cause. And this is something which we wanted from years together, because we started this process way back in 2006 codification, and now actually we could see the act. So there are some good provisions under the law which says that you cannot sell the child, or the embryo cannot be transferred from your country to another country. You cannot use the children for prostitution or other forms of exploitation. It talks about the insurance coverage. I talked to you earlier as well for 36 months after the delivery of the child. It talks about the restrictions on number of cycles. So this is how they have taken care of the health of the surrogate mother, as well as the egg donors and the sperm donors. It talked about the written informed consent of the surrogacy, so that she should be aware about the complications through which she may have to go, and what could be the results of the surrogacy or this kind of pregnancy. The law clearly prohibits now the abandonment of the child because of the past experiences. This talked about the rights of the surrogate child. Now, surrogate child will be declared as the biological child of the intending parents, so he need not to struggle for the inheritance and all. Then even limitation is being prescribed on number of sites and number of embryo transfer, because this is also very intrusive process, and therefore they have restricted the limit. They have restricted the number of embryos to be transferred. This is like one embryo at a time, otherwise triplet, या फिर क्या बोलते हैं उसको, like five children, six children, these kind of children may be born out of the surrogacy. We could see these kind of incidences. So therefore they have restricted now one embryo at a time, only in exceptional circumstances where we could give some medical clarification. Maximum 3 embryos at a time is allowed. And it definitely talked about prohibition of abortion. अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगी, नहीं child carry करूंगी. You can't say so. So you will have to carry the child up to the full term, and you need to accept the child as it is. So abortions are prohibited, definitely subject to the conditions prescribed under the Medical Termination Act. So Medical Termination Act will be applicable. Other mechanisms which are talked about under the law are, National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, state boards, and appropriate authority. This is a good mechanism to have a check. If you surf through the internet, you will find that today even there is a website called as National ART and Surrogacy Portal.
Department of Health Research Ministry and Health and Family Welfare, Government of India. So they have given all the information regarding all the techniques available. They talked that they have already nominated members and constituted the different boards under the law. Like this is a notification in regarding constitution of the National Surrogacy and ART Board. The portal also talks about the different authorities, but talking about the authorities at appropriate time. Now this is a right time to talk about the authorities. Now see, even in regarding appropriate authority, the problem is most of the authorities are even today not aware that they are the authorities, or if they are aware of that they are the authorities, they do not know what are the procedures which they are supposed to follow while granting some NOCs, or allowing some applications which comes before them. Now, even some of the authorities are not constituted the way it should have been. We can take the example of Maharashtra. After the lecture, you may surf through this and go and click on the Maharashtra. Then you will realize from this portal that board has been not notified. Okay, but only ex officio members, those are bureaucrats, those are appointed. Okay, now those are required as per the law only suggests कि ये लोग होने चाहिए. They have appointed them, they have nominated them, but there are also experts which are required to and they need to be nominated, but unfortunately yet experts have not been nominated in many states. So where will we go? Because we read certification from these authorities, but this has yet not been constituted. Another irony is that see, minister need to be the chairperson of these boards, and you need to apply before the minister for getting certificate. Now we all know for sure that minister may be in the city just twice in a week. That may be because of the formalities, because of the political pressure that they need to be. We are not into that actually, but what I mean to say, assumably, just we will presume that everything is at place, and minister is actually in the city, and we may actually opt for the certificate. But look at the kind of you know kind of efforts we may have to take to get the certificate. Look at the cost which we may require to put for getting the certificate. We may have to go to from pillar to pillar, and the doctor also may have to wait. We may also may have to wait. So this is something which is really horrifying. uh, this Even in regard to confidentiality, see, we all know that we need rather, whenever we talk about the reproductive rights, we always says that or we always shows our concern about informed consent, privacy, and equity in access to these technologies. But this is also been infringed here. Now why this is infringed? Because look, uh, until now, before the this particular act, surrogate mother was made very confidential, that was never disclosed. But now, if for getting the certificate, you need to disclose the name of the surrogate mother. What does it mean now? uh, to choose not to disclose who you are have gone. Okay, so now you will have to disclose your name, and the anonymity has gone in this request. On the top of it, you will surprised to know sperm donors are required to submit their Aadhaar cards. Okay, Aadhaar cards while donating the sperm. This is something which really is a serious encroachment upon one's right to privacy. There are other offenses and penalties as well, but I guess it's time for me to wind up. Ma'am, can I take just another 5 minutes? Yes, yes, madam. You can take You five can minutes. continue. The other resource person is yet to join. Okay, You can. okay.
So we will just skip this, but I will just like to inform you that there are good penalties and which are being rather incorporated under the present law. Now again, if you compare the penalties with the other legislations in the other countries which where this is being regulated, then you will find more stringent approach is taken while imposing penalties in India. But this is what I feel is very much needed due to past experiences. Another important thing which I would like to bring to your notice is plea bargaining shall not apply to the offenses under this act. This is really a very good thing which has happened here. Now there are another judgments, recent judgments which talked about the reproductive rights of a woman, and this is a judgment. I will be sharing this PPT with you, so you may go through the PPT in detail later on. But I will just briefly will take you to the recent judgments which talked about the reproductive autonomy and which are trying to protect the reproductive autonomy, though there are certain faulty provisions. So by removing those faulty provisions, see, again and again I'm saying there are faulty provisions. I do understand that this is a teething problem, and definitely as new law comes, we may face new issues, and it is not expected from the legislature that they will anticipate all the future conditions and situations, and accordingly they will be prepared. No, I'm not expecting that, but at least you should have taken some clue from the kind of fate which donor organ donation act is facing, PCPNDT act is facing, but still you are making laws based or on the line of these laws, that is organ donation act and PCPNDT act. It seems the total focus of the government is to somehow ban the commercial surrogacy. I do understand the past experiences compelled us to ban commercial surrogacy, but we could have some reasonable approach. We could have been rational while applying the provisions, and by especially in the light of the recent developments which are happening into the society, we should realize that society is evolving and we need to adopt the change according to the changing notions of the society. That is just I want to say. So actually this is a case which talked about the unmarried woman, and it tried to protect the rights of unmarried women, but it has yet not been decided completely, in the sense these were the issues raised before the court of law. And this is another case where the court have clearly stated that yes, the age bracket which has been prescribed is not a good bracket. This is and in this case, sorry, I'm extremely sorry. Actually, I'm in rush now. Yes. So I just wanted to say this is a case where again the court talked about the reproductive autonomy, dignity, and privacy under Article 21, and they talked about the rights of the unmarried woman to have access to these reproductive technology. Then this is a judgment where the court talked about the age bracket, and in this judgment the court laid down certain tests and asked the appropriate authority to decide the application of the person who may be beyond the age bracket prescribed under the law on the basis of these tests. So genetic test, physical test, economic test, whether they are capable to bear the child, they want to just test that. If whether they are capable to give life to the healthy child, this is just they want to say, see, and therefore they have laid down this test and they have asked. I actually wanted to talk about certain other, countries' legislations which have regulated the surrogacy, but the time doesn't permit us. But still, I would say that in most of the countries, commercial surrogacy is banned today. But as far as access to technology is concerned, they have not restricted to this technology to one person or another person, and they have actually make it open for all kind of couples and persons, irrespective of their sexual preferences or marital status.
So these are certain laws through which you may go later on. I have written down in short that what kind of laws do we have in other countries. So just to sum up what we have discussed today, now see, as am saying again and again, definitely this is definitely a very, very noble step taken by the government by uh, you know having and enacting a statute, because we really wanted to go away with the commercial practices which were actually giving birth to many other controversies into the society. But I wish that these technologies should be utilized to empower women and enhance the results of their reproductive health, not to control or limit their choices. But unfortunately, this is what exactly is happening with the present state of statute. Even I feel that as I talk to you, that many authorities are not aware about, and whether they have been established or not, that is also not known to the people. So information about the district medical board, appropriate authorities should be made available at every medical hospital and colleges, and authorities concerned shall be sensitized towards the about the procedure laid down in the act to ensure speedy disposal of the applications, because speedy disposal is a key aspect which need to be addressed for the matters, sensitive matters like having a child, biological child of the man. So with this, I will just end on my part. But if you have any question, I'm ready to address them. Questions that the participants have written in the chat box. Um, may I just read them for you, ma'am? How will I be getting access to the chat box? Ma'am, it is there. You can just click on the chat option. You'll be able to Yes, open the chat box. yes, 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 I can see. Yeah. What about the mental effects? I'm reading for everyone and for myself as well. What about the mental effects on surrogacy upon the surrogate? As it is, pregnancy leads to a lot of bodily and mental changes, and therefore, after childbirth, the surrogate will go through a lot of trauma after separating from the baby born to her. Yes, this is really real reality, and this is more so. This is more so in altruistic surrogacy. Look, at least before, we were having a kind of contract with an unknown lady. Even her name was not disclosed, and we are not having a right to know the birth parent and all. So because of this, there was an anonymity. Now what is happening in the relative? Say for example, my sister is acting as a surrogate mother for me. I know for sure she will be having that affection toward my child, and this will lead to further complications. Obviously, even mother, so the child with time, maybe at the age of 16 or 17, but he will also come to know that I'm not the actual mother who has given physical birth to my child, and this is the mausi, or this is sister, my sister. So obviously this is going to make the matter further complicated, and this is really bad. But nobody talked about this, nobody bothered about this, and there is no such provision. And it's really difficult to make some legal provision for this as well. But that is what I say. Why do we are insisting only upon altruistic surrogacy? This could be one of the challenge then. Another question, Hello, ma'am. science. Hello, ma'am. Uh, Yes. I'm Meera. Thank you so much, ma'am. You have given a wonderful session for me. It is very helpful for me. I want to ask you one question, ma'am. Can Hmm. only in the surrogacy law, the medical expenses or insurance which is given to the surrogate mother, can it Y- infringe some constitutional rights of mother? Can you hear, ma'am? yes, I got it. What did you, the last part of the question, what was it? Uh, can You talked can about it that can, medical and medical yes, and medical insurance expenses? expenses. Expenses and insurance expenses which is given to the actually surrogate mother.
So Huh. can it some extent it is the infringement of the constitutional rights of the mother? No, 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 not all, not at all. How will Uh-huh. it be? Because look, Uh, see, huh, see, when I say that I'm giving my services huh, to someone, I'm huh. actually So providing services for that yes, individual. So obviously, it is the responsibility of that couple that they should take care at least of the medical expenses incurred by me and the insurance. And they should cover if the expenses if at all I may need in future after delivering a baby. So obviously, this will huh. not at all be an infringement. Rather, No, ma'am. this is Yes, yes. enhancing. I yes, I got your point, ma'am. Okay. I'm asking only commercial surrogacy is banned now. Altruistic is only uh, Yes. allowed. Yes. So Yes. that's why I'm asking this question about that extent. I got your Sorry. point, ma'am. Yes, no. Okay. Okay. Hello, Okay. hello. Yes, yes. Okay, Mamta. Hello. I will take the other question. Science Yes, yes. 2017 at Philadelphia Child Hospital, scientists have been trying to make artificial womb. If they succeed in near future to make artificial womb instead of surrogacy, will it solve the problem of infertility? Single unmarried child scientists also trying to fetus. Profiling after will it create legal issues for such? Yes, this is rather a wonderful question because look, the era has come where we are introducing new reproductive technologies to the existing one. Now, not only the artificial womb, but let me inform you that even artificial eggs can be created, even artificial sperms can be created. Now the actually scientific development is going on this. Researchers are working on this, and even if you can surf through the internet, you will find that sheep is being developed into the artificial womb. Now, as of now, they have allowed this only for 14 days, but recently, last month only, international organization which is working for the scientific research and all, which is governing rather scientific research, they have issued a notification that they are about to grant further concession, and they may allow researchers to go for more period, and then now we may have the fetus, they may experiment, and they may have the fetus into the artificial womb maybe more than 14 days. So the research is going on, and we may have success in near future. This has started in 2016, and we have got such results in the year 2023. Now this clearly indicates that maybe within 10 to 15 years we may really be in a position to create artificial womb, artificial sperms, artificial, you know uh, uh, ova, and that too from your own genetic material. Okay, own genetic material. So what does it indicate? That this will change the face of the artificial reproductive technology. This will definitely bring another revolution into the technology, and then we may not need the laws like this, because then, but there will be different challenges then. Definitely different challenges are bound to come. There are certain ethical issues which are Sandhya coming. madam, Yes. Sandhya madam, sorry to interrupt you. Extremely sorry, but another resource person has joined the meeting. Okay. Okay. Just last question I will take. Illegal activities may be Participants, if you avoided. have any questions, we will send it to you on the Pasanda madam's email. Yes. It is Okay. in the Okay. chat box, Okay. or we will share with you Sandhya madam's email ID. Okay? Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. That was a very Thank you, enriching ma'am. session, respected Sandhya ma'am. We had a very good 1 hour. We learned a lot, Thank you, right madam. from what is Listen, surrogacy madam. Honorable to Sandhya, madam. Thank you. the law and the legislation that is there in India. So, on behalf of the postgraduate teaching department of the RTMNU, I would like to extend gratitude on behalf of all the research scholars that you came here and you gave your exhaustive experience on this subject and shared it with us all. Thank you so much, Sandhya ma'am.
for such an enriching session. Thank you, ma'am. Thank you, Gayatri. Thank you. So I will Ma'am, leave thank the you so meeting. much. Yeah. Thank you, Very Prabha. informative session, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. So now I will leave the meeting, Padma ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you for joining, ma'am. Yeah. My pleasure. Yes, Gayatri. Hello all. Now after completion of our first session, today we have with us respected Dr. Ashok Bagul sir for our second and third session for the day. Before sir commences with his lecture for the day, I would like to give a brief introduction about sir. Sir is currently working as the subdivisional police officer of Bhandara district. Sir has completed his PhD in criminal law and has delivered more than 100 guest lectures as a speaker at different organizations on cyber security and safety. Cybercrime awareness and digital safety are his domain. He has been a member of different interview panels. Sir has worked extensively and exhaustively in the field of cyber law, cyber security, and cybercrime. Today, Sir is going to elaborate upon the recent trends in cybercrime and investigation. I welcome you, respected Dr. Ashok Bagul sir, on behalf of the Postgraduate Teaching Department of Nagpur University. Over to you, sir. Good afternoon, dear all. I hope I am audible and visible. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah. If I am audible and visible, the people who are watching me, they can please raise their hands. Yes, sir. Then Yes, I sir. can. You are audible and visible, Yes, sir. I am audible and visible as well. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you so much. So, shall I proceed? Yes, sir. Okay, thank you so much.
First of all, I would like to congratulate the organizers, RTNMU, PGTD, my wonderful friend Mr. Giriji, who may not be here today, HOD and Senate member, and a very respectable person, Srimati Payal, Gaure ma'am, Shikha ma'am, and all the people who might be behind organizing all these wonderful sessions for the PhD scholars. I hope you all are enjoying the sessions till now. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you so much. Respected Yeah. Honorable sir, Yes. sir, may I request you for a little louder, please? Louder. वैसे तो Yeah, पुलिस a bit louder, sir, please. पुलिस वैसे बहुत जोर से चिल्ला सकती है, but I don't know whether the respectable people would be able to bear my shouting. Anyway, Sir. I hope, is it okay now? Okay. Is it okay now? Okay, sir, please go ahead. Yes, Okay, sir. thank you so much. Sir. Right at the outset, Sir, I'll take the permission of Shikha ma'am, Giriji and Payal ma'am, and whosoever are the people behind this successful organization, that I'll try and go through the slides of PPT, try and explain the things as well. But there are two things which we can do. The audience, anyone of the audience, if they have some doubt, query, difficulties in their mind, they can either stop me and ask the question intermittently, or if we can keep the question answer session afterwards, the way you like. तो क्योंकि मैं जब ऑडियंस में होता था, स्टूडेंट होता था, तो मेरे दिमाग में जब टीचर पढ़ाते थे कुछ सवाल आते थे, अब टीचर पूछने का मौका नहीं देते थे, बोलते थे पीरियड खत्म होने के बाद पूछो, तब तक मैं वो क्वेश्चन भूल जाता था, डाउट भूल जाता था. तो आई होप it do not happen with any one of you. So if at all someone is having some questions, doubt or difficulties, with the permission of organizers, you can either ask intermittently or afterwards. So shall I proceed with the slides now? yes, sir, please. Thank you so much. As we all know, my dear friends, first of all, please accept my heartiest congratulations for trying to complete your PhD, because PhD is one such degree. जब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, I can understand, हमको बहुत अच्छा लगता है. So I'll be happy to see that all of you are getting through your PhD research within minimum possible time, and you will be getting doctorate very soon. So police is known for doing the things after everything is over. मैं सबसे पहले आपको congratulate कर रहा हूँ बिफोर हैंड और एडवांस में. So I hope you all shall appreciate it, because they say that पुलिस सब कुछ होने के बाद ही आती है, तो कुछ चीजें पुलिस पहले भी कर लेती है. So I hope you all must understand all these things. Modern day policing is a bit different, and there are some wonderful officers in our department as well, who are highly intelligent, capable, competent, motivated, devoted, inspired, committed, focused to protect the life and property of the people. With due respect to all the people of this wonderful nation, law-abiding and peace-loving citizens, we respect them, we respect you all. But please ask yourself one question. If you are very handsome, beautiful, intelligent, rich, famous, multidimensional, dynamic personality, we are very happy and proud of you. But all these qualities come into force. All these qualities come into force, or these are the things which can be of a bit significance only if you are safe, only if you are alive. And again, as I told you, we respect the people who are contributing significantly in their own capacity to ensure the overall growth of mankind, overall growth of our society, of our nation, of our state. But a doctor, a lawyer, a judicial officer, an administrator, a mediaman, a politician, an MLA, MP, minister, all the senior most administrative officers, IAS officers,
business people, labor class, everybody, different status of the society, everybody is playing their role, contributing in their own way to ensure the overall progress of mankind. But what is the difference between all these wonderful people and police? You can never expect a doctor, a lawyer, a judicial officer, a mediaman, a businessman, an MP, MLA, minister, whosoever it may be, to come forward to protect your life and property, to lay down their own life if required to protect your own life. Only police and paramilitary forces are doing all these things. Paramilitary forces, they are protecting the boundaries of a nation. They are protecting the nation from outside enemy attack. Police is basically for internal security. My dear friends, as we all know, when you know the enemy, it's a bit easy to overpower him or her, to defend yourself, to attack him. But when you don't know the enemy, when you know only think that enemy is someone from among us, is someone from our own nation, our state, our area, our region, our district, our city, our lane, or he may be your neighbor. So unless and until you identify him, how can you protect yourself? So I hope you understand, protecting the boundaries of a nation are very important from the attack of enemy nations. But what is equally or even more important is to ensure internal security. And I hope you all agree that unless and until people are able to lead their normal life, how can they enjoy their life? The sheer fact that we are conducting this webinar today indicates that the law and order, the peace and tranquility, the social fabric of the area is intact. For instance, you just imagine, I am extremely sorry, these are all hypothetical things. I wish and I pray to God that it shall never happen. But for instance, just imagine that there is a bomb blast outside the room which you are sitting in. क्या होगा? आप ये वेबिनार कंटिन्यू करेंगे या जान बचा के भागेंगे? आप जान बचा के भागेंगे. आप वेबिनार कंटिन्यू नहीं कर सकते. सेम रूल अप्लाई टू वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ. आप जो भी काम कर रहे हो, आप वो काम तभी कर सकते हो जब आपकी जान को खतरा ना हो. अगर आपकी जान को खतरा है तो एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, एज एन ऑब्वियस रिस्पॉन्स, you will try and protect your life. My dear friends, this is the duty of police. So I don't know what kind of image you all people are having in your mind about police. If it is not very positive, I do not blame you. If there are some reasons for you, some better people like you, law abiding, peace loving, intelligent citizens like you, that police is not having better image in the eyes, I can only say sorry. I can apologize on behalf of all the police officers and men from whom some one of you at some point of the or the other might have came across some wrong experience. I am not here to justify the mistakes of police, but the fact remains that there are better and not so better people everywhere. You tell me whether any society, any area exists on this planet which is totally crime free. A crime free society is a myth. It never happens anywhere. Now, who is controlling crime? Who is preventing crime? Who is registering crime? Who is investigating crime? Who is detecting crime? Who is trying to convict the crime and criminals? As a matter of duty, it is police who is doing it. मैं ये बातें आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगे कि पुलिस बहुत अहम रोल प्ले कर रही है. आप जानते हो और मेरी बातें सुन के शायद आप में से बहुत लोग अपना ओपिनियन बदलेंगे नहीं. मैंने भी पीएचडी किया है.
पीएचडी के बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं. मेरी वाइफ को जब मैंने बताया, पायल मैम, आई एम थैंकफुल टू हर. आई थिंक शी वाज विटनेस टू माय पीएचडी प्रेजेंटेशन, and she is a very understanding, intelligent, capable lady to praise me after my presentation. She said that अच्छा हुआ आपका हो जाना चाहिए. तब तक मेरा पीएचडी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने पीएचडी किया, I went to my wife and told her that I have completed PhD. She said, तुम्हारा दिमाग पहले ही खराब था, अभी तो तुम पीएचडी बन गए. PhD stands for permanent head damage. So I don't know what is the experience of all the married men. If there are any here sitting here or listening, I don't know. But PhD का एक लॉन्ग फॉर्म मेरी मिसेस ने जो मुझे बताया था, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मतलब पढ़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा. आई एम अ स्टूडेंट फॉर एवर. बट पीएचडी का ये भी लॉन्ग फॉर्म होता है, ये मुझे घर में पता चला. तो जो भी महानुभाव यहाँ पे बैठे, ऑल दी हस्बैंड्स, बी श्योर that even after completion of your PhD, I am not very sure that you will be able to impress your better half. I'm sorry, this is not to discourage you from completing PhD, but the most challenging job on this planet is to impress your better half. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे अगर कोई शादीशुदा दिलीप कुमार परिदा साहब का नाम दिख रहा है, डॉक्टर रविंद्र इंगोले साहब का नाम दिख रहा है मुझे, बाकी कौन कौन यहाँ पे मेल है आई डोंट नो. इनका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप मैरिड हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. ऑल सेड एंड डन, आई मीन आई हैव गॉट अ वंडरफुल वाइफ. शी कंट्रोल्स मी वेरी नाइसली. Entirely agreed with. यस डॉक्टर साहब, I agreed with you, sir. Entirely, totally agree with you. you do not have any other option, my dear friend. Even if you don't agree, you have to accept it. Anyway, Sir. on a serious note, whatever all said and done, wife is the one who is controlling the entire family. So I salute, I respect all the wonderful women sitting here, married or unmarried. जिनकी भी शादी नहीं हुई उनकी जल्दी होनी चाहिए, अगर वो करना चाहती है तो. ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं. But a man is a man and a woman is a woman. A woman is a mother, she is a sister, she is wife, she is friend, she is philosopher, she is guide, she is everybody. So I respect all the wonderful women sitting here, because you all are doing a wonderful job, that is to work outside also and work inside your home also. मुझे नहीं लगता इंगोले साहब घर पे अगर, मतलब इंगोले साहब, आई Sir. डोंट नो, अगर आपको घर में भी कुछ कपड़े बर्तन कुछ मतलब ऐसा कुछ है क्या? नहीं sir, thank you. नहीं नहीं ये नहीं. ये बाहर पब्लिकली एडमिट भी नहीं करते डॉक्टर साहब, मैं भी नहीं करता हूँ. Very honest sir. नहीं नहीं sir. I'm very lucky in that way. वेरी लकी, वेरी Yes गुड. sir. दिलीप कुमार जी का क्या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता. ऐसे मतलब धोने में कभी कभार कपड़े वगैरह बर्तन में कभी कभार इंगोले साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच बीच में, अगर मतलब जी. sorry, extremely sorry. On a serious note, why I am telling all these things to you all wonderful people sitting here is that cyber crime is becoming rampant day by day, week by week, month by month, year by year. As a police officer, I can tell you that the most ancient and serious crime which are committed by mafias, organized crime syndicates, hardened criminals, international gangs is what? On first number, it was human trafficking. It is still, human trafficking is still the most serious and ancient crime of our, mankind. Second was drugs dealing, and the third was arms dealing. Now the thing which I am going to tell all of you shall send shiver down the spine of everybody. Please listen carefully. The total amount of illegal cash transaction. The total amount of illegal cash transaction in all these 3-4 serious most crimes put together was
lesser than the illegal transaction that has happened in cybercrime last year. What does it mean? What does it mean? It means that cybercrime has become the most serious challenge to entire humankind. Agree or not? जो लोग एग्री करते हैं थैंक यू सो मच, जो नहीं करते हैं Yes, sir. Yes, sir. उनको भी हम कुछ बोलना नहीं चाहते। आज आप सब लोग मेरी बातें एज अ फैकल्टी मेंबर सुन रहे हैं। अगर भगवान इस दुनिया में है तो मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप में से कोई भी कभी भी एज अ विक्टिम, एज अ कंप्लेनेंट shall never come to meet me in police station. Agree or not? Sir. But are you sure? जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं मेरी बातें, क्या वो गारंटी से बोल सकते हैं कि साहब मेरे साथ कभी साइबर क्राइम हो नहीं सकता, या मैं कभी साइबर क्राइम कर नहीं सकता? अगर इसमें से कोई आदमी या औरत, रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर ये क्लेम कर सकते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बट मैं बड़े दुख के और दर्द के साथ बताना चाहता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट इंचार्ज ऑफ फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ नागपुर सिटी, एंड wherever I have gone, wherever I have taken charge as an incharge of police station, I thought that थानेदार सबसे बड़ा गुंडा होना चाहिए। थानेदार सबसे बड़ा गुंडा होना चाहिए। किसके लिए? गुंडों के लिए, फॉर क्रिमिनल्स, नॉट फॉर लॉ अबाइडिंग पीस लविंग सिटीजन्स लाइक यू ऑल। क्योंकि गुंडे आपको डराते हैं, वो गुंडों ने हमको डरना चाहिए, ऐसा मैं समझता था। उस ढंग से हमने काम करने की कोशिश की है। बड़े खुशी के साथ बताना चाहूंगा, बड़े खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि काफी हद तक जहां जहां पे मैं इंचार्ज रहा, क्राइम कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब रहा, काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। बट बड़े दुख के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में उतना कामयाब नहीं रहा जितना मैं ट्रेडिशनल क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। Why? Why? What may be the reason? There are so many reasons. Doctor Saab, can you please give me one reason why cyber crime is difficult to control or prevent as compared to traditional crime? Sir, I think criminals are one step ahead than that of police cops. Yeah, you are right. Anyone else? Advocate Anuj ji, अनम्यूट कर दीजिए। अगर एडमिन की परमिशन है तो बीच बीच में मैंने बोला तो चलेगा क्या? आई डोंट नो। शिखा मैम, डू यू परमिट? सर चले, थैंक यू सो मच। चालेल सर। अनुज जी, क्योंकि मैं इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। आई वांट दिस टू बी इंटरेक्टिव सेशन। वरना जब मैं स्टूडेंट था ना, इतने बोर लेक्चरर आते थे और कोई चारा नहीं होता था सुनने के अलावा। अभी ये गुस्सा मैं कुछ लोगों के चेहरे पे देख पा रहा हूँ। अनुज जी, ये कौन है महोदय? थोड़े से गुस्से में देख रहे मेरे तरफ, किसको बुला लिया मैडम ने? अनुज जी, कैन यू गिव वन रीजन? Enemy is unknown, sir. थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए प्लीज। Sir, enemy is unknown. That's why. वेरी गुड। एनीवन एल्स? यस, योरसेल्फ। So what I believe is that, sir, people are aware of the traditional crimes, but people are not aware of the cyber crime. Therefore, they are not in a position to prepare Very good. themselves Very good. or prevent the cyber crime. Very good. Ritesh ji, you are right. Anyone There are else? no Someone from boundaries. among the intelligent, competent There girls, are no beautiful girls boundaries. sitting here? There are no Modern boundaries technology, use to the of modern crime. Gayatri technology. ma'am. Yes, there are no boundaries ma'am. for the crime. Many a times the perpetrator can be in another country and another jurisdiction altogether. Very good. You are right. I know PhD scholars are supposed to know most of the things that are happening around, and I am really proud and happy for all of you. You all are correct. The sheer fact, the most important difference, along with all the things which you all wonderful people have mentioned right now, is in every traditional crime like murder, rape, extortion, dacoity, robbery, kidnapping, etc., 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 etc. Now please listen the words carefully. A criminal has to be physically present along with the victim at the scene of the crime.
not in case of cybercrime. As Anuj ji has told, or Mr. Ritesh or ma'am has told, cybercrime can be committed by anyone who is sitting in the remotest corner of the world against anyone who is sitting in another remotest corner of the world. How can you identify the enemy? सामने अगर दुश्मन दिख रहा है तो उसको आप पकड़ सकते हो, खुद को बचा सकते हो, उसको मार सकते हो. दुश्मन नहीं दिख रहा है, हवा में गोलियां चलानी है. This is one reason. There are so many other reasons as well. We will try and go through the slides and then we will try and explain all these things. ये बातें मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ कि आज का ये वेबिनार या प्रेजेंटेशन एक एकेडमिक करिकुलर रेगुलर जो भी चीजें कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वो तो है ही, बट उसके साथ साथ इफ इट बिकम्स वेरी यूजर फ्रेंडली which can add to your knowledge, which can add something to your knowledge, to your information, to your awareness about cybercrime, the basic purpose of calling me here is served. I am thankful to Payal ma'am, Chika ma'am, Girish ji for giving me this opportunity, because there are Supreme Court, Honorable Supreme Court directions that police must try and make conscious efforts to make people aware. अब मेरे इंट्रोडक्शन में किसी ने बताया कि 100 भाषण में दे चुका हूँ, 100 नहीं दे चुका हूँ, 400-500 दे चुका हूँ, बट मैंने उनका गिनती नहीं रखा है. मुझे गिनती रखने की जरूरत भी नहीं. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माई सेल्फ. आई एम हम्बल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल पब्लिक सर्वेंट. आई वॉन्ट नथिंग in return of my address to you all people. I want only one thing. I want one thing. I want all of you to be safe and secure from being victim to cybercrime. I want all of you not to commit any cybercrime yourself, knowingly or unknowingly. ये मैं चाहता हूं. क्या मैं सही चाहता हूं या गलत चाहता हूं? सही चाहते हैं मेरा सर. रिक्वेस्ट है, ये चैट बॉक्स में आप कुछ टाइप करके भेज सकते हो ना. आई एम नॉट अ वेरी टेक्नो सेवी पर्सन. मेरे पास is my friend Mr. Ambadare is techno savvy. My Amaldar, but he is having much more technical knowledge than me. जिन जिन लोगों को हाँ चैट बॉक्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. मैं ये चाहूंगा कि till I finish, you shall give your feedback in the form of whether you like today's address or not. If no, why? If yes, why? झूठा appreciation, flattery, superficial praise, I don't want. मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहन किया है, बहुत ज्यादा लोगों की गालियां खाई है, बहुत ज्यादा पत्थर भी खाए हैं, बहुत बार मरते मरते बचा भी हूँ, और कभी कभी कुछ बातें करना पड़ती वो भी की है हमने. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ड्यूटी. तो मुझे आप बहुत अच्छा बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बुरा बोलोगे तो बुरा लगेगा, ऐसा भी नहीं है. बट अगर आपकी क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, अगर आपके क्रिटिसिज्म में सच्चाई है, तो आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी बेटर. दैट इज वाई आई हैव गॉट ऑल दीज डिग्रीज. अदरवाइज पुलिस में इतनी डिग्रीज, एजुकेशनल डिग्रीज का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट फॉर एवर. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं इसके आगे भी करने वाला हूँ. मैं पायल मैम को इसके आगे भी तकलीफ देने वाला हूँ. एंड शी हैज एग्रीड, शी हैज प्रॉमिस्ड दैट यस शी विल लिसन टू माई रिक्वेस्ट एंड शी विल डू द नीडफुल. अभी इसके आगे क्या डिलीट करना है, क्या करना है, सोचूंगा. बुढ़ापे में भी कोई अच्छी चीज की जा सकती है. I am telling all these things to all you wonderful people sheerly for the reason that whatever you are doing in your life, please continue with that. But don't forget that the moment there is a small threat to your life, to your hard-earned money, you will be depressed, you will be disturbed, you will be stressful, you will be going to different kind of trauma. और जब आपके साथ कोई क्राइम होगा तो आप कोई वेबिनार अटेंड नहीं करोगे, कोई कॉलेज स्कूल में नहीं जाओगे, एग्जाम भी शायद नहीं दोगे. आप सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे. आप सबसे पहले अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जान है तो जहान है. सर सलामत तो पगड़ी 50. बचपन से ये जो कहावतें हम सुनते आ रहे हैं बहुत मीनिंगफुल है. पुलिस में आने के बाद मुझे उसका मीनिंग बहुत अलग ढंग से समझना पड़ा. तो माय डियर फ्रेंड्स,
ऑल सेड एंड डन, मैं ये बातें आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि जो भी वेबिनार्स, प्रेजेंटेशंस, एड्रेसेस अभी तक हुए होंगे, इसके आगे होंगे, हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये मेरा जो एड्रेस है, इसको आप सिर्फ एकेडमिकली ना लेते हुए, अगर प्रैक्टिकल जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा कंसर्न है, जो मेरा कंपैशन है कि अगर मैं आप लोगों की जान और माल बचाने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाया, तो आई एम डूइंग जस्टिस टू माय जॉब। अगर ऐसा हो पाया तो आज शिखा मैम ने, गिरीश जी ने, पायल मैम ने जो मुझे बुलाया है, वो मकसद पूरा हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम giving or imparting some information which we are going to do in some time from now. So thank you so much, my dear friends. Now we will focus on the slides. ये दावले की पूरे होते हैं। मुझे बोलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड। someone शिखा मैम, नेक्स्ट। शिखा मैम, I don't know if she is still there. I'll request the person who is Sir, which slide, sir? Sir, which slide you next. I'll read the slide. I'll try and explain it, and I'll say next. When I say next, you please ask the person to click. Slide number 2, Padma. Slide number 2. PPT का slide number 2. just अभी सुन दे। अभी जो भी व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है ना, वो मैं नेक्स्ट बोलूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड को क्लिक कर देगा। आई विल बी थैंकफुल टू हिम और हर, whosoever it is. 1 minute, sir. या नहीं, इससे पहले वाला। इससे भी पहले वाला। आप मेरा जो और पीछे जाइए प्लीज। Padma, और start पीछे। with first slide. First slide. हाँ, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कीजिएगा, फिर आगे जाइएगा प्लीज। इससे पहले यस, नेक्स्ट। पहले कुछ नहीं है सर। नेक्स्ट। Okay, now cyber crimes are not always financially motivated. It also include non-monetary offenses, frauds such as job-related frauds, matrimonial frauds, stealing and misusing sensitive personal information. I am damn sure you all people are doing your PhD research work with the help of internet. You all must be saving some data in the form of electronic record. Yes or no? Now tell me, when your final exam submission time approaches, your presentation time approaches, and all your work is corrupt, your files are stolen, your data is stolen, what will happen? Just imagine. That is why it is not only monetarily, but there are some other ways to commit cybercrime as well. Now, what are the general criteria under which we can differentiate cybercrime? First is identity theft, psychological tricks, social media related attacks, digital banking frauds, attack through mobile applications, virus attack on personal computer, extortion. New trend of cybercrime that we will touch afterwards. Next slide. अगर मेरी बातें, वो जो भी महानुभाव बैठे क्लिक करने के लिए, अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो नेक्स्ट बोलूंगा तो आप प्लीज उंगली कर देना। उंगली करने में वैसे सभी माहिर होते हैं। सॉरी, थैंक यू। Identity theft. Identity theft is an act of wrongfully obtaining someone's personal information without their permission, like name, phone number, address, bank account number, Aadhaar number or credit and debit card number. Identity theft can have many adverse effects. क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप में से किसी के साथ आइडेंटिटी थेफ्ट का क्राइम होता है तो वो व्यक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। He can gain access to your bank accounts. He can apply for loans and credit cards or open insurance accounts on your name. He can file a tax refund in your name and get your refund. He can obtain a driver's license, passport or immigration papers. He can create new utility accounts. What is that? This is what normally happens in case of identity theft. Next. Now, this is first type of identity theft, hacking or gaining access to social media accounts.
You ask yourself one question. How many people sitting here are not having Facebook account, Twitter account, Instagram account, Snapchat account, Signal account, Telegram account, and whatever it may be. कोई है यहाँ पे बैठा हुआ जिसका फेसबुक पे ट्विटर वगैरह अकाउंट नहीं है? हाँ सर, मेरा नहीं है। कौन है महानुभाव? जरा मैं चेहरा देखना चाहूंगा। सच है, हैंडसम बॉय। कौन है भाई? एनीवे, अगर आपका नहीं है तो भाई रजत जी आप हो? जी सर, जी सर। रजत जी, यू आर मिसिंग समथिंग। Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. can be used I have to only make yourself two aware about email the use of accounts and one technology. WhatsApp account. It can be used to gain information. It can be used to keep yourself updated with what is happening around. तो अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो भैया, तो आप क्या सच में 21st सेंचुरी के मॉडर्न सिटीजन हो? ये सवाल अपने आप को पूछिए। अगर जवाब हाँ है, प्लीज कंटिन्यू, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं ये बातें इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सब होना बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है। रजत जी। जी सर। क्या करते हो भाई? कौन से कॉलेज से पढ़े हो? सर पीजीटीडी से ही पढ़ा हूँ। मम्मी डैडी क्या करते हैं बेटा? सर पापा डॉक्टर है, मदर रिटायर्ड प्रोफेसर है। यार उनको मेरा नमस्ते बोलना। मैं ऐसे पेरेंट ढूंढ रहा हूँ कि जो अपने बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद मोबाइल नहीं दे रहे, और अगर मोबाइल दे रहे तो 2000 का डिब्बा दे रहे जिसमें कि कोई इंटरनेट नहीं है। तो तुम्हारे पास कम से कम डिब्बा है या डिब्बा भी नहीं है? सर मेरे पास फोन बड़ा है, लेकिन उसमें फंक्शन में कुछ कम रखता हूँ। मतलब फेसबुक एक्टिवेट हो सकता है मोबाइल पे या नहीं? 2.5 GB डेटा का पैक है, लेकिन मैंने कोई फेसबुक में अकाउंट बनाया ही नहीं। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। तुमको मैं मिलना चाहूंगा यार रजत। तुम्हारा चेहरा, हैंडसम चेहरा मैं करीब से देखना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि कम से कम एक ऐसा मुझे जवान मिला कि जो चैटिंग करता है बेटा। नहीं सर, अपनी व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है ऑफिशियल, बस वो, बाकी और कुछ नहीं। नहीं, मैं अनऑफिशियल के पूछ नहीं रहा ना बेटा। पूछूंगा तो बताएंगे थोड़ा तू? नहीं सर, अनऑफिशियल कुछ है भी नहीं। अबे तो कुछ होगा भी तो बताएगा थोड़ी। वो तो तब पता चलेगा जब उधर जिसके साथ चैटिंग कर रहा है वो अगर थाने में आके कोई कंप्लेंट करती है तब पता चलेगा। एनीवे, सॉरी बेटा, आई होप यू डोंट माइंड। मैं ये बातें इसके लिए बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया अकाउंट आपका बहुत इजीली हैक हो सकता है। द क्रिमिनल्स कैन गेन एक्सेस टू योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे वेबिनार का या एड्रेस का, जिसको मैं अभी टच करने जा रहा हूँ या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सभी प्लीज लिसन केयरफुली इफ यू कैन। These are the ways how you can prevent yourself from being victim to the cyber crime or committing some cyber crime knowingly or unknowingly yourself. Do not save your username and password in the web browser. Never. मैंने जब पहली बार मोबाइल लिया, हैंडसेट आईफोन था, सबसे पहला आईफोन शायद मेरे पास आया होगा एरिया का, बट मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता था और मुझे थोड़ा ऊपर का माला खाली है मेरा, तो मैं सेव कर लिया यूजर नेम पासवर्ड। अब अगर आप यूजर नेम पासवर्ड सेव करते हो तो दैट कैन बी इजीली सीन बाय एवरीबॉडी, यस और नो? तो मुझे किसी ने बताया कि साहब ऐसा मत कीजिए, आपका पासवर्ड सब लोग देखते हैं। अब पासवर्ड क्या रखते थे 15-20 साल पहले लोग? जिसको आप प्यार करते उसका नाम रखते थे। रजत जी है ना आपका नाम? रजत, आपका पासवर्ड क्या है बेटा? बताना नहीं सर, वो ऐसा शब्द है जिसको कोई इमेजिन नहीं करेगा। क्या बात है, वेरी गुड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएचडी स्कॉलर्स एंड अदर्स। ये बातें मैं आप सबको इसके लिए बता रहा हूँ कि ये बातें एज अ थानेदार, एज अ इंचार्ज ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन, आई वाज वेरी मच वरीड व्हाई पीपल आर कीपिंग द पासवर्ड सिनोनिमस टू द नेम ऑफ द पीपल दे लव। बीवी का नाम रख दिया, बेटे का नाम रख दिया, भाई का नाम रख दिया, पापा का नाम रख दिया, मम्मी का नाम रख दिया, दोस्त का नाम रख दिया, मोबाइल नंबर रख दिया, गाड़ी नंबर रख दिया। रजत, आप किसको प्यार करते हो? मम्मी के अलावा और दीदी के अलावा? मैं अपनी मम्मी का और बहन का नाम छोड़ के बोलो। किसी को प्यार नहीं करता।
नहीं करते हो? चलो तुमको ऑल द बेस्ट बेटा, जल्दी करने लोगो। इतना हैंडसम लड़का और कोई मतलब एनीवे डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट आई ट्रस्ट योर वर्ड्स। Anyway, my point is that never ever you have to save your username and password. The second thing is, do not close the browser window without logging out of the account. आजकल बच्चे साइबर कैफे में जाते हैं क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन हो चुका है, सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। The students are going in the web cyber cafe, they are opening their account, and after they download whatever they want to, or they complete their assignments, presentations, homework, whatever it is, if they come out of the cyber cafe without logging out of the account, your entire data is vulnerable. Sir, sorry to interrupt you, but Mr. Rajat and Mr. Ravindra Ingole, sir, kindly mute your mic. Yeah, yes, please. Thank you so much, ma'am. You can give some valuable instructions intermittently. So these things are the most important things which can avoid you from being victim of identity theft. The second type is misuse of photocopies of identity proofs. Never provide details or copy of identity proofs, example PAN card, Aadhaar card, voter card, driving license, address proof to unknown person organizations. Never do it. Otherwise you will land in problem. Be careful while using identity proof at suspicious places like petrol pump, hotels, etc. Next. The third type is credit and debit card scheming. This is very rampant. पहला वाला मैडम या सर जो भी है, नेवर शेयर योर पिन विथ एनीबडी। ये पीपीटी मैंने 5 साल पहले बनाया था। अभी तो खैर ये चीज हर बच्चे को पता है कि पिन कभी भी शेयर नहीं करना है। ऑलवेज एंश्योर दैट योर क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वाइप्स आर शॉपिंग मॉल्स पेट्रोल पंप आर डन इन योर प्रेजेंस। अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें देखिए, वो एक वेटर है होटल का, ये दोस्त गए एंजॉयमेंट करने होटल में, ढाबे में खाना वाना खाया, थोड़ा अल्कोहल वगैरह ड्रिंक्स लिए जो भी है, and the waiter came and asked for the bill. Sir, how are you going to pay the bill? Cash or credit card? अब आजकल जेब में बहुत ज्यादा लोग कैश रखते नहीं है। वो बोला क्रेडिट कार्ड, उसने क्रेडिट कार्ड इंसर्ट किया है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, लुक एट द आईज ऑफ द फ्रेंड्स एंड लुक एट द आईज ऑफ द वेटर। वेटर की आंखें किस ढंग से वो कार्ड स्वाइपिंग मशीन को देख रही है। इंसर्टेड द कार्ड और वेटर ने बोला सर पासवर्ड। अब ये शराब के नशे में धुत था, क्योंकि आई डोंट नो दोस्ती और मतलब एंजॉयमेंट के क्या क्या मायने होते। मैं आई डू नॉट ड्रिंक, आई हैव नेवर टेस्टेड अल्कोहल टिल नाउ एक्सेप्ट जो दवाइयों में कभी मिला होगा। तो शराब पीने के बाद क्या क्या मजा आता है ये अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक नहीं लिया है। ये शराब के नशे में उसके सामने पिन नंबर डायल करता है, वेटर ध्यान रख रहा है। कार्ड निकाला, बिल हुआ 5,000 6,000, 3 दोस्तों ने खाया पिया जो भी है। घर पे आए, he got a message on his cell phone, 40,000 rupees are debited from your account. इसको घर में एसी था, गर्म होने लग गया इसको, 40,000 गए मेरे। थोड़ी देर में फिर से 2 मिनट में मैसेज आया 40,000 मोर आर डेबिटेड। इसका जो शराब का नशा था पूरा उतर गया। ये भागा किधर भागता है कोई भी जब प्रॉब्लम में आता है? रजत जी, आपकी तरफ सर। जब भी कोई प्रॉब्लम है, पुलिस में बाकी लोगों में यही फर्क है कि जब भी संकट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, बम ब्लास्ट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग गिर गया, नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सब लोग संकट से दूर भागते। देयर इज ओनली वन पर्सन जो संकट की तरफ भागता है, कौन होता है वो? आपकी तरफ सर। यू नो इट बेटर। ये भागा पुलिस स्टेशन में आया, ऐसा बताया, फिर पुलिस ने वो क्राइम रजिस्टर किया, ये वेटर को पकड़ा। वेटर ने बताया कि ये जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन है ना, ये कार्ड स्वाइपिंग मशीन नहीं है। इट इज फिटेड विथ मैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम इनसाइड which will take the entire data transferred to their system. That is why you have to be sure कि जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो, whether it is not manipulated। और ये कैसे पहचान सकते हैं?
सिंपल टेस्ट है, ये मेरा सेलफोन है, इसमें से अगर मैं सिम कार्ड निकालना चाहूंगा तो छोटा सा पिन मुझे इसमें डालना है, दबाना है, सिम कार्ड विल कम आउट, something is protruding out. If the card swiping machine is genuine, nothing will be protruding out, otherwise it is a manipulated card swiping machine. If something is protruding out, you can watch it. These are simple tricks, my dear friends. Next is psychological tricks. Now, what is psychological tricks? These are where the attackers play with the minds of the user to trap them with lucrative offers. Once trapped, the attacker can exploit the victim by either stealing money or stealing sensitive personal information. You all know, ये स्लाइड बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी के स्कॉलर हो आप। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है आप सबको पता है। इसके एग्जांपल्स क्या है साइकोलॉजिकल ट्रिक से? लॉटरी फ्रॉड, क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड, जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड्स जैसे कि मैंने बताया, मैंने वेबिनार्स में आम पब्लिक के लिए बनाया था, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए नहीं। PhD scholars are supposed to know the basic information. Next slide, please. Shikha ma'am. Yes. Lottery fraud, credit debit card fraud. How you can save yourself from lottery fraud? Do not respond to the messages from unknown source requesting personal or financial details, even if it assures credit of money into your bank account. Do not respond to suspicious emails or click on suspicious links. Do not transfer money to any untrusted unknown account. I can give you ample examples. मैं बाद में रियल लाइफ स्टोरीज पे भी आने वाला हूँ, क्योंकि ये थेरोटिकल बातें कभी कभी उतनी अपील नहीं करती है, प्रैक्टिकल बातें ज्यादा अपील करती है। मैं आपको कुछ क्राइम्स बताऊंगा जिसमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और बाद में हमने उनको कैसे पकड़ा। रजत जी, आई होप यू विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन ऑल सच काइंड ऑफ केस स्टोरीज. Yes or no? Yes, sir. Most of the people are using lower middle class or slum class people. They will ask them to open their account into a bank after a genuine KYC, underline genuine KYC. They will open their account. They will offer some money कि तुमको ये अकाउंट तुम्हारे नाम से खोलना है, तुमको सभी चीजें जेन्युइन ही देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, birth proof, whatever it is required to open an account. That is a genuine KYC. After your account is functional, operational, they will give 10,000, 15,000, 20,000 to the person. उसको बोलेंगे बेटा ये 20,000 रख, तेरा अकाउंट, तेरा सिम कार्ड मुझे दे दे। अब वो आदमी ज्यादातर अनपढ़ होता है, कभी कभी पढ़ा लिखा होता है, उसको 20,000 मिल गए, 25,000 मिल गए, लेबर क्लास है, स्लम में रहने वाला है, उसको इज हैप्पी। उसका अकाउंट में ये ट्रांसफर करता है इलीगल कैश, ह्यूज ट्रांजैक्शन, लैक्स ऑफ रुपीज, क्रोर्स ऑफ रुपीज। आई हैव अरेस्टेड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड जिनके अकाउंट पे ये ट्रांजैक्शन होता था उनको पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है। इसलिए आप ये सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि बैंक में जो भी हो रहा है आपको मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन और अलर्ट्स आना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करते, 6 महीना बाद बैंक में जाते हैं, दे फाइंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज वैनिश फ्रॉम देयर अकाउंट। दे विल आस्क द मैनेजर क्या गया, वो बोलता है तुमने तो नहीं है ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बट वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं था इसलिए उसको मैसेजेस नहीं आए। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट ट्रांसफर एनी मनी टू एनी अनट्रस्टेड अननोन अकाउंट। एंड अगर आपके अकाउंट में भी ऐसा कोई पैसा आता है अनअकाउंटेड, you immediately have to inform police or the banks, otherwise you will be victim. You will not be victim, you will be accused. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है, because there are two type of negligences: administrative negligence, negligence committed in good faith, and criminal negligence. What is criminal negligence? Your negligence, if it leads to some commission of some crime, then it is your legal bounden duty
to ensure that you are not a party to the crime, you are not abettor of the crime, you are not conspirator of the crime. Otherwise, you will be equally punished. So this thing is very important. Credit debit card frauds. Do not get petrified if you receive a call stating that your card is blocked. Bank will never convey such information on call. अभी तो खैर लोग काफी सजग हो चुके, मैंने खुद आपको बताया 400-500 वेबिनार तो मैं खुद ले चुका हूँ। बहुत सारे पुलिस वालों को ये पता नहीं है कि ऐसा वेबिनार लेना उनके ड्यूटी का पार्ट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है। जब नागपुर सिटी में था तो देयर वाज नो अदर ऑफिसर, जब मैं लिए थे तब तो महाराष्ट्र में भी शायद किसी ने नहीं लिए होंगे। So I told my senior officer, sir, it is our duty to make people aware. So please understand that this thing is very important. Next is social media fraud, sympathy fraud, romance fraud. अब sympathy fraud क्या होता है? Rajat ji, you said that you are not chatting with anyone. One fine morning you receive a message of good morning. आपने immediately देखा, DP देखा या प्रोफाइल देखा, कोई खूबसूरत लड़की है, क्या करोगे? सर अननोन नंबर से बात नहीं करूंगा, चैट नहीं करूंगा। यार तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो यार। नॉर्मली सब लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। वो गुड मॉर्निंग का जवाब दे देते हैं, गुड मॉर्निंग, फिर उधर से आता गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। धीरे धीरे ये बातें बढ़ते रहती है। धीरे धीरे फ्रेंडशिप और एक वक्त आता है रजत जी कि उधर से अगर गुड मॉर्निंग ना आया तो अपना मॉर्निंग बैड हो जाता है। यू नो यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, दे से दैट हैबिट्स डाई हार्ड, हैबिट्स डाई हार्ड। मनुष्य हा सवयींचा गुलाम असतो, जर मराठी कोणाला कळत असेल तर। डॉक्टर रवींद्र इंगळे साहेबांना कळतं मला वाटतं, ही इज द ओनली पर्सन हु कॅन अंडरस्टैंड मराठी। तो सर आई एम हियर ओके सर। हाँ, तो ये एडिक्शन हो जाता है। द गर्ल इज ट्राइंग टू Yeah. विन द सिंपैथी। सिंपैथी फ्रॉड कैसे होता है? वन फाइन मॉर्निंग रजत जी शी विल आस्क यू, माय मदर इज एडमिटेड, प्लीज ट्रांसफर मी 20,000 रुपीज। अब एक मतलब ट्रेडिशनली किसी औरत को अगर इम्प्रेस करना है तो मर्दों के पास क्या क्या तरीके होते हैं? पैसा खर्चा करना ये भी एक तरीका हो सकता है। क्या आई एम स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ओवर यू। हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया था, एक लड़के की गर्लफ्रेंड थी, वो लड़का आया, नॉर्मली गर्लफ्रेंड्स की कंप्लेंट होती है, वो लड़का आया बोलता साहब मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप क्या चीज होता है रजत जी? सर मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ इसलिए आई डोंट नो। आपको तो पता भी नहीं होगा ना। बड़ा सज्जन यार, ऐसे पीएचडी में कितने स्कॉलर है इतने सज्जन, आई डोंट नो। मुझे बड़ी खुशी हो रही। वो लड़का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आया, उसने क्या कंप्लेंट दिया? साहब मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने बोला तो हम क्या, पुलिस क्या करेंगी, तुम्हारा पैचअप करवा देंगी? नहीं, बोले साहब वो ब्रेकअप को जाने तो छोड़ दो, उसको उसने दूसरा बॉयफ्रेंड पकड़ लिया। मैं बोला जान दे यार, तू भी दूसरी ढूंढ ले। नहीं नहीं वो तो मैं ढूंढ लिया, बोले पहले ही, मेरी पहले से ही थी। मैं बोला फिर इधर क्यों आया? बोले उसके भी पहले से 4-5 बॉयफ्रेंड थे, मेरी 3-4 गर्लफ्रेंड थी, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले सर उसने मेरा बहुत पैसा, उसके ऊपर मैंने बहुत उड़ाया, बोले वो पैसा मेरे को वापिस चाहिए। अब लड़की को बुलाया हमने, हमारी लेडीज पुलिस ने बुलाया लड़की को, वो लड़की बोली उड़ाया तो उड़ाया, अब उड़ गया, मैं इसका पैसा वापिस नहीं दूंगी। बोले रजत जी अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो? सर मैं तो कभी पैसा उड़ाया ही नहीं, तो आई डोंट नो। अच्छा, फिर से बोलूंगा यार, इतने सज्जन बच्चे यार, आई डोंट नो। पद्मा मैम, पायल मैम, ये पीजीटीडी के प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है, हमारे टाइम पे नहीं थे, थोड़े से हम भी वहां के स्टूडेंट रह चुके। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू सीरियसली इज दैट द गर्ल हैज ट्राइड टू विन द सिंपैथी ऑफ द बॉय, ही हैज ट्रांसफर्ड 20,000 रुपीज, और अगले दिन जैसे 20,000 रुपए गया, अगले दिन हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गायब। वो लड़की ने पैसा जैसे आया भाग गई। सिंपैथी फ्रॉड, बहुत सारी कंप्लेंट आती है। मैं कोई आपको ड्रामा या ऐसी फिल्मी स्टोरीज नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर, आई एम अ रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर। आई एम शेयरिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू, और थोड़ा सा एंटरटेनिंग होना चाहिए, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ।
Do not share personal details or get into financial dealings with an unknown person whom you have met on social media platform. अब बहुत सारे कम लड़के होते हैं रजत जैसे कि जो सोशल मीडिया पे किसी से बात ही नहीं करते। यार ये लड़के को मुझे मिलने को बड़ी खुशी होगी। Be careful while accepting friend request from strangers on social media. ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। किसी का रिक्वेस्ट आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, किसी को रिक्वेस्ट भेज दिया, मुझे पता नहीं जिसका रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया वो कौन है, मुझे मालूम नहीं था, जिसको मैं भेजता था वो कौन है मुझे मालूम नहीं था। अब मैं वो नहीं करता हूँ। You never know. Keep your family friends informed in case you plan to meet a social media friend. This is how you can avoid sympathy fraud. Now romance fraud. ये romance fraud क्या होता है रजत जी? कभी किया ही नहीं। Romance fraud. Anyone, if someone has gone through all these things, किसी के साथ हुआ है तो I don't know. पिछले महीने हमारे यहाँ पे एक लड़का आया, सर बोले मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिया है। वो गर्लफ्रेंड को पता चला कि ये अभी बड़ा अफसर बनने जा रहा है, उसके 2-3 दूसरे बॉयफ्रेंड होंगे, उसने इसके खिलाफ कंप्लेंट दे दिया। इसको पता चला, उसने इसका कंप्लेंट दे दिया। वो लड़का बोला कि सर मेरा तो लाइफ बर्बाद, मतलब ही वाज लिटरली क्राइंग। दैट वाज अ वेरी सीरियस सीन। हमने वो लड़की को बुलाया, उसको पूछा क्या हुआ, किसी ढंग से उसमें से हम सॉल्यूशन ढूंढ पाए। रोमांस फ्रॉड. Be cautious while responding to unknown friend requests on social media platforms. Do not respond to unknown friend requests. Never share intimate pictures with anyone on online platform as they can be misused later. Do not share personal details or get into financial dealings with an unknown person whom you have met only on social media platform. My dear friends, all PhD scholar friends, when you will be growing, you will be developing, you will be progressing in life. You will be a known entity. If you are winning the elections, if you are fighting some elections, if you are heading a particular department, if you are being noticed by people more and more, then there will be people who will be praising you, appreciating you, and there will be some people who will be jealous of you, who will be trying to find the opportunity to fix your happiness, to screw your happiness, to pull your legs. So please understand that we have to be extra careful when you are trying to become some entity. Next, cyber stalking, cyber bullying. What is cyber stalking? How to save yourself? ये गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि किसी लड़की ने अगर किसी लड़के को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेज दिया तो लड़के को लगता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे पास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स आई है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है लड़कियों को विशेषतः कि अगर आप अननोन व्यक्ति को ये भेजती हो तो नो प्रॉब्लम, बट इफ यू थिंक दैट द पर्सन इज नॉट जेन्युइन, then you must restrict access to your profile. Social media sites offer you privacy setting for you to manage who can view your post, photos, send your friend requests, etc. etc. Ensure your personal information, photos and videos are accessible only to your trusted ones. इसमें मैं आपको बताऊंगा, मैंने बहुत सारे क्राइम रजिस्टर किए जिसमें कि लड़कियों का फोटो शॉपिंग किया है, मॉर्फिंग किया गया है, नीचे पूरा फुल नेकेड बॉडी, ऊपर चेहरा किसी और का फोटोशॉप करके मॉर्फ करके डाल दिया है। और बहुत सारे मामलों में, in most of the cases or in some cases, the accused or the criminal was someone from their family, friends or known people. ऐसा भी होता है, तो ये आप प्लीज ध्यान में रखिए। इफ यू आर ओके विद इट, वी डोंट माइंड, क्योंकि आजकल prostitution is a legal business in most of the developed, so-called developed nations like Singapore, Hong Kong, Malaysia, Bangkok. मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंकॉक सिंगापुर का टूर करने गए। हमने भाभी जी को फोन किया, भाभी जी ये जा रहा है। अब भाभी जी बोली मुझे छोड़ के कैसे जा रहा है। अब उनका जो भी हुआ बाद में काफी वो बड़ा मामला हो गया। तो अगर सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, बैंकॉक कोई जा रहा है और फिर फैमिली के साथ जा रहा है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। नॉर्मली बैचलर वगैरह जाते हैं या पता नहीं लोग, ये क्यों होता है?
prostitution is a legal business there. Even pornography is a licensed business in some of the so-called developed nations of the world. But child pornography is a crime everywhere. And I can tell all the people sitting here or listening here very happily and proudly that when I was in charge of cyber police station, my police station was leading the entire nation. My police station was leading the entire nation in taking suo motu action, proactive police action against this serious menace called as child pornography. I have registered 48 cases. 48 cases. The only police station in entire nation to register 48 cases where we were complainant on behalf of government. We do not want anybody to come to police station as a complaint. We have become complainant on behalf of government because Prevention of Sexual Assault Act against children, there are mandatory provisions. Some people may be student of law. Padma ma'am hai, Payal ma'am hai, Shikha ma'am hai, Girish sir hai. These people are teaching law, and ignorance of law is no excuse. किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्लिपिंग अगर अपने वीडियो में अपने मोबाइल में रखा या उसको पब्लिश किया, he can be prosecuted. I have prosecuted 48 such criminals. साइबर स्टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए लड़कियों को ये सब करना जरूरी है. साइबर बुलिंग, it is like ragging only. Here counseling is more important. Counseling of teams. Next, मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड्स. ये क्या होता है? नाउ दिस इज आईफोन 14 प्रो या जो भी है, मैं ज्यादा इसमें जानता नहीं हूँ. ये दुनिया के सबसे अच्छे सेलफोन में से एक है. बट अगर इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ कॉल लगाने और कॉल लेने के लिए करूंगा तो शायद इसका जो कीमत है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा. वो तो मैं 2000 रुपए के डब्बे से भी कर सकता हूँ. मोबाइल एप्लीकेशंस, what are the facilities, what are the applications, what are the softwares that are downloaded? It makes your cell phone or system a bit more important. Now, कैसे होता है fraud? These applications are more prone to cyber attacks. User need to be aware of such attacks on commonly used mobile applications such as digital payment applications and gaming applications. Cyber attacks using infected mobile applications. Fraudsters use to attack the victim by infiltrating through such popular mobile applications. They infect the applications with malicious software called Trojan virus. 3 Idiots फिल्म देखी होंगी रजत जी या बाकी किसी ने. वायरस किसको बोलते हो? वायरस. ये ट्रोजन एक ऐसा वायरस होता है कि जो आपके सिस्टम को खराब कर देता है. दिस ट्रोजन कैन गेट एक्सेस टू योर मैसेजेस, OTP, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, फोटोज एक्सेट्रा फॉर मैलिशियस एक्टिविटीज. नेक्स्ट, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है. आप हर चीज का एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो. मेरा एक दोस्त है, उसका पासपोर्ट गुम हो गया. उसने मुझे फोन किया कि मैं फॉरेन में जा रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट गुम हो गया. अब लोगों को कभी कभी पुलिस की याद आती है जब वो प्रॉब्लम में आते हैं. हम बोलते हैं भाई पुलिस से दोस्ती कर लो. लोग बोलते हैं पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी. हम बोलते हैं भाई दुश्मनी किसी से भी अच्छी नहीं होती, दोस्ती से हर किसी से अच्छी होती है. वो नहीं मानता था. प्रॉब्लम में आया, फोन किया, हमने थोड़ा हमारे कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा बहुत हेल्प किया. नाउ ही इज फीलिंग ओके कि पुलिस इतनी खराब भी नहीं होती है जितना कि हम समझते. मैं बोला यार अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं. इट इज आवर परसेप्शन. और आजकल पुलिस में भी कुछ वेल मैनर्ड, वेल एटिकेटेड, वेल बिहेव्ड लोग बहुत सारे हैं. डू नॉट गो ऑन perception which are based upon assumptions, false assumptions. मेरा रिक्वेस्ट है कि you form your opinion only after your own experiences. This is a serious problem with image of police. Why I am telling you all these things, my dear friends, is that even after this webinar or presentation or address is over, I'll be happy if we all can become friends. Again, I'll pray to God that you should not contact me when you are in problem, because I pray कि nothing shall happen to you, but we never know किसके साथ कब क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं है. तो दोस्तों, एक डॉक्टर है या वकील है या पुलिस वाला है, इनको अगर आप जानते हो ना तो
कभी कभी काम आते हैं, मुसीबत के टाइम पे काम आ सकते हैं। तो मुसीबत क्यों ना हो, दोस्ती कर लो। मुसीबत से कभी कभी दोस्ती करना अच्छा होता है। वो मेरा पासपोर्ट वाला दोस्त ऐसे ही बोलता है कि तू यार, तू मुसीबत है बट तेरे से फिर भी मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है भाई, थैंक यू। तो योर मोबाइल एप्लीकेशंस can be very important to all of you, and cyber attackers are using infected mobile applications. इससे बचने के लिए क्या करना जरूरी है? Always install mobile applications from official application stores or trusted sources. Scrutinize all permission requests thoroughly, especially those involving in privileged access when installing or using cell phone applications. Regularly update software and mobile applications to ensure there are no security gaps. अब इसमें periodically आता है मुझे software update is pending. It will be installed later tonight, ऐसा मैसेज आता है। तो मैं जब रात में जाता हूँ, इसको चार्जिंग को लगा के सॉफ्टवेयर का अपडेट इंस्टॉल कर लेता हूँ, तभी ये फोन, आईफोन या कोई भी फोन आजकल दुनिया का जिसमें कि इतना पैसा हम खर्चा करते हैं, उसका अगर सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है तो यू मस्ट अपडेट इट। बट अपडेट क्या क्या करना है? सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एप्लीकेशंस जो मैलिशियस चीजों से आपको बताए, मैलिशियस अपडेट से आपको बताए। नेक्स्ट, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, इसके बारे में आजकल सबको पता है। इससे कैसे बचना है? एग्जांपल्स क्या है इसके? डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक्स, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड, हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट ड्यू टू सेम पासवर्ड। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक से अगर आपको बचना है, नेवर शेयर योर मोबाइल अनलॉकिंग पिन और पासवर्ड विद एनीवन, register your personal phone number and email with your bank and subscribe to notifications. Always keep a maximum transaction limit for your bank accounts. जब हम छोटे थे तो MSRTC की बस से मामा के गांव जाते थे, तो मैं हमेशा मैं जिस बस में बैठता था उसको अगर किसी ने हराया, किसी ने ओवरटेक किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई यूज टू गेट एनॉयड। मैं बोलता था मेरा ड्राइवर जोर से क्यों नहीं भगा रहा। बाद में पता चला कि MSRTC की हर बस को एक्सीलेटर कितना भी दबाओ 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भागती नहीं। अब ये तरीका है। मेरा पीएचडी का एक टॉपिक हाउ टू कंट्रोल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन फैटल एक्सीडेंट्स, ये भी है। दुनिया भर कहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। कोविड में 2.25-2.5 लाख लोग मरे, और हम ऐसा सोच रहे कि कोविड इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द मैनकाइंड। An invisible microscopic virus has brought the entire world to a standstill. Everything was closed. Colleges were closed, schools were closed, malls were closed, theaters were closed, public meetings were closed, business was down, factories were closed, industries were closed, everybody was jobless, labor was unemployed, owners were unemployed, mandirs were closed, masjids were closed, churches were closed, gurudwaras were closed, agaris were closed. भगवान को भी जब ताला लगा के बंद करके रखा गया था, तब रास्ते पे कौन था? आप सबको पता है। We salute all the people who were indulging in essential services at the time of lockdown, at the time of curfew, at the time of social distancing, where your sheer coming out of your home was the greatest danger to your own life. That time, it was the police, paramilitary forces, and the people who were indulging in essential services who have tried to maintain the security, law and order, crime control. My dear friends, अगर बस के एक्सीलेटर को कितना भी दबाओ तो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भागेंगे नहीं। वैसे ही आप अपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर आपने लिमिट रखना चाहिए, सो दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यूएस के पास ऐसे हैकर्स है, हर देश के पास ऐसे हैकर्स होते हैं। अब वो अपने आप को एथिकल हैकर्स बोलते हैं। एथिकल अनएथिकल हैकर कुछ नहीं होता है, हैकर इज अ हैकर। आज आप अगर एथिकल हैकिंग कर रहे हो तो कल आप बहुत इजीली यू कैन डू अनएथिकल हैकिंग। The person who knows hacking can do it both ways. Technological advancements are double-edged swords. Atomic energy, atomic bomb, when it was invented, it was claimed that it is the biggest discovery on this planet, which can help develop mankind very fast. We agree. We accept that atomic energy is the most strong and powerful energy. But
Who can forget that 8th of August 1948, Hiroshima and Nagasaki are also the fallout of the same atomic energy when it was used in the form of atomic bomb. The most important thing of this address is the same thing. Technology can be used for better purposes, and the same technology can be used for commission of cybercrime. My dear friends, unless you make yourself aware, unless you know the things, unless you raise your information level, your experience, your expertise level to such an extent where you can be safe, please understand that you can fall victim to cybercrime anytime. Hacking of bank account due to weak password. पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जैसे रजत जी ने बोला, अनइमेजिनेबल है. वेरी गुड. It must be at least 8 character long. It must be a combination of letter, numbers, and special characters. You must use different password for your different accounts and devices. Two-step verification such as OTP whenever possible is very important. If one of your online accounts has been hacked, immediately log in and change the password to a strong unique password. Next. Hacking of multiple account due to same password. Immediately change the password. Next. पर्सनल कंप्यूटर पे भी अटैक कर सकते, जैसे मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बोला. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कॉल्स? डू यू वांट कार लोन, होम लोन, इंश्योरेंस लोन? मुझे लगता है एवरीबडी सिटिंग हियर मस्ट हैव गॉट such kind of calls sometime or the other in their life. Now the first question which must come to your mind is that how does that girl, that call girl मतलब जो कॉल सेंटर में बैठ के कॉल करती है वो गर्ल, क्योंकि आजकल ये लड़कियों को कॉल सेंटर में बुलाया जाता है, उनसे ग्राहकों से कांटेक्ट करवाया जाता है. और रजत जी, अगर आपको किसी मर्द का फोन आया तो आप कितना पसंद करोगे मुझे नहीं पता, बट अगर किसी बहुत अच्छे आवाज में अगर कोई लड़की बोल रही है रजत जी, तो आप उससे बात करोगे या नहीं करोगे? ये नहीं करेगा अकेला. ये बहुत ही सीधा साधा सच्चा इंसान. लेकिन हर कोई रजत नहीं होता है. It's very obvious, it's very natural to respond to a call from, even if it is unknown. Most of the people are falling prey. How this is happening? Why this is happening? When you are downloading any software or app in your mobile, they are asking you permissions. Do you allow access to your contacts? You say yes. Photos, yes. Videos, yes. Data, yes. Why are you allowing the access? My request to you all people is that please read the terms and conditions whenever you are downloading any software. वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है और उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, इसका अगर अंदाजा आपने नहीं किया, you are vulnerable. Same thing can happen with your cell phone. Same thing can happen with your personal computer. Virus attack. Virus attack through external devices. Virus attack by downloading files from untrusted websites. Virus attack by installation of malicious software. Next. How to avoid this thing? The most important topic of this address. Computers and laptops should have a firewall or antivirus installed, enabled and running the latest version. Always scan the external devices, example USB or viruses, while connecting to the computer. Always keep the Bluetooth connection in an invisible mode unless you need to access the file transfers on your mobile phone or laptop. Hacking of bank account due to weak software. Never download और इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर. आजकल हर फिल्म की सीडी 50-100 रुपए में मार्केट में आ जाती है. और फिल्म रिलीज करने में जब टाइम लगता है, लोग उसको पहले देख लेते हैं. करोड़ों रुपए खर्चा किया बेचारे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, फाइनेंसर ने. वो टिकट लेके थिएटर में नहीं देखते हैं, पायरेटेड सीडी देख लेते हैं. You are getting it is for 50 rupees, but it is totally corrupting your system. Don't forget that. Do not click on URL links provided in suspicious emails, SMSs, even if they look genuine, as this may lead you to malicious websites. Next. Types of virus attack on personal computers. Virus attack by installation of malicious software.
Always use genuine software and application to avoid potential security lapses. Never download or install pirated software applications except on your computer, laptops, or handheld devices. Always read the terms and conditions before installation of any application. Next. एक्सटॉर्शन, ये नया ट्रेंड है, 3-4 साल पहले नया था, अब तो हर किसी को पता है। रजत जी, आपको पता है ना सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन में क्या होता है सबको पता है। A beautiful girl is calling you or video calling you and she is asking you to go into bedroom, bathroom, close the door from inside. She will ask you, are you interested in all kind of chats or video call? Naturally or obviously, अब रजत जी जैसे कुछ सज्जन लोग छोड़े, विश्वामित्र बहुत कम है आजकल। यानी सामने अगर उर्वशी, रंभा, मेनका, अप्सरा नाच रही है और ये विश्वामित्र जी आंखें बंद करके तपश्चर्या कर रहे हैं। अब आजकल की दुनिया में ऐसे कितने विश्वामित्र है मुझे नहीं पता, कम ही होते, ना के बराबर होते। जितना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आ रही है, ये विश्वामित्र जी की मुझे बहुत याद आती है। मैंने माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत पढ़ी है, रामायण, महाभारत, जो भी है, नवनाथ कथा सार, श्री कृष्ण कथा सार, उसमें ये माइथोलॉजिकल बातें होती थी। बट आजकल कोई लड़की उधर से अगर वीडियो कॉल पे कोई ऑब्सीन हरकतें कर रही है, तो कितने लोग इमीडिएटली बंद करेंगे, कितने लोग आंख बंद कर लेंगे और कितने लोग उसको एंजॉय करेंगे। It's very natural and obvious to respond the way you are getting the response from other side, but that is the thing which will lead you to be victim of sextortion. They will record it, they will blackmail you, they will try and extort money from you, they will make it viral on social media platform, they will send it to the friend list. बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक बहुत बड़े रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन के कुछ बच्चे, जवान बच्चे, दीज थिंग्स आर ऑब्वियस। अभी मैं तो बुढ़ा हो गया, बट रजत जी जैसा एक वक्त पे मैं भी जवान था। वी ऑल डॉक्टर इंग्लिश साहब तो मेरे से भी जवान दिख रहे, यहाँ पे शायद बुढ़ा मैं अकेला ही हूँ। जो भी जवानी में से गुजर चुके हैं उनको ये सब बातें पता है कि द काइंड ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, mental, emotional, hormonal changes that are happening inside our body when our body is growing, when we are becoming teenage or adolescent or young boy or girl. The people who can handle these changes positively are a bit safer. Other people are very easy targets, they are vulnerable ones, they can fall prey or victim to all such tactics of the people who are doing it in the form of organized crime syndicate, mafias. Next. ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट, अभी जो लोग खाने के शौकीन है, यहाँ पे कुछ लोग होंगे खाने के शौकीन, कौन कौन है मुझे नहीं पता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। प्रीवियस स्लाइड, पहले वाला, शिखा मैम, थैंक यू। जी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो खाने के लिए जिंदा रहने वाले और दूसरे जिंदा रहने के लिए खाने वाले। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप अपने आप को पूछिए। जो लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं वो लोग शायद ये थाली ऑफर जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू टाइप ऑफ फ्रॉड, इसके विक्टिम होने के चांसेस कम है। लेकिन जो लोग खवैये होते, खवैये, खादाड़, अरे और खुशी से, अरे मैं तो यार खुशी से बताते, मुझे एक बार ये मिल गया वो मिल गया तो मैं कितना भी खा लूं। कुछ लोग खाने पीने की शर्तें भी लगाते, मैंने देखे। 100 गुलाब जाम खा गया है पहलवान, अब 100 गुलाब जाम खाने के बाद उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, वी डोंट नो, खा गया। तो जो जिंदा रहते खाने के लिए, ऐसे लोग इसका विक्टिम होने के चांसेस ज्यादा है। आप पढ़िए, उसमें लिखा है बाय 1,000। अब कितने लोग इसका माफ करना, ये सब कंप्लेंट मैं ले चुका हूँ एज इंचार्ज ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन। ये कंप्लेंट मैं ले चुका और बड़ी विनम्रता से माफी मांग के चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि इसकी शिकार औरतें ज्यादा हुई है। औरतें ज्यादा आई थाने में कि सर मैंने थाली का ऑफर किया, ऑफर में मिला, मेरा पैसा चला गया, अकाउंट में 40,000 चले गए।
रजत जी क्या वजह हो सकती है? ये सर फेक अगर साइट है। दुश्मनी लेने की तैयारी है तो बता दो क्या वजह होती है कि द गर्ल्स और वुमेन आर विक्टिम इन मच मोर परसेंटेज एज कंपेयर टू बॉयज। मैं मतलब मेरे थाने में जो कंप्लेंट आए थे उसके रेशो से मैं आपको पूछना चाहता हूँ। रजत जी बताइए क्या कारण हो सकता है? सर ये साइट फेक होगी, हल्दीराम की साइट नहीं होगी। ये साइबर स्क्वैटिंग एक जो यार यू आर टू टेक्निकल रजत जी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन. I am asking you that the percentage of victims was much more in women or girls as compared to boys or men. What may be the reason? probably ladies don't want to cook sometimes, so they order online food. कितना यार, कितना सही जवाब दिया यार आपने. आप पार्लियामेंट में होना चाहिए यार, बहुत ही एकदम पार्लियामेंट्री वर्ड्स में जवाब देते हो. सही, बहुत बढ़िया बेटा. यू विल बिकम अ वेरी गुड लॉयर. आई डोंट नो व्हाट आर योर प्लान्स. पीएचडी तो जरूर कंप्लीट करोगे. मेरी 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 बीवी को मैंने ये सवाल पूछा, उसने ये जवाब दिया कि बोले ये देख के जिसके मुंह में ज्यादा पानी आएगा वो विक्टिम होने के चांसेस ज्यादा है. अब ये अच्छे अच्छे पकवान देख के हर किसी के मुंह में पानी तो आना चाहिए. किसी के मुंह में ज्यादा आएगा, किसी के मुंह में कम आएगा. तो जिसके मुंह में कम, जो जो मतलब जो पीपल हु आर, जो खाने के लिए जिंदा रहते और ये चीज बड़ी शौक से फख्र से बताते कि मेरे को तो ऐसा लगता, मेरे जो वैसा लगता, मैं ऐसा नहीं खाता वैसा नहीं खाता. भाई मैं तो जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, इसलिए मेरे जैसे लोगों के चांसेस कम है. ऑन अ सीरियस नोट, हल्दीराम के जो ओनर है वो मेरे अच्छे मित्र है. मैंने उनको पूछा कि क्या आपने ऑफर दिया है? वो बोले बिल्कुल नहीं. 50 क्राइम मैं खुद रजिस्टर कर चुका हूँ. 50 इन द स्पैन ऑफ 1 year व्हेन आई वाज इन चार्ज ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन. तो फिर हमको बताना पड़ा, माँ जी बहन जी, अब फ्री में अगर कोई चीज मिल रही तो ज्यादा आनंद किसको होता है, मर्दों को या औरतों को? अब ये भी मैं झगड़ा नहीं लगाना चाहता हूँ. रजत जी, इधर भी औरतें भाग रही. फोकट में अगर मिला तो ज्यादा खुशी किसको होती है, मर्दों को या औरतों को? रजत बेटा, डॉक्टर इंगळे साहेब, घ्याल तुम्ही रिस्क, घ्याल का खरं सांगायची? सर ऑब्वियसली फीमेल्स को. और ये सवाल अगर मैं शिखा मैम को या पायल मैम को या पद्मा मैम को पूछूंगा तो क्या जवाब होगा? शिखा मैम आर यू देयर? Sir, because जो औरतें होती है दे नो हाउ टू सेव मनी, इसलिए उनको ही ज्यादा बेटर लगता है. अच्छा अच्छा, दैट आई फुल्ली एग्री. मेरा सवाल ये नहीं था. सर ही एक प्रकारची वृत्ती आहे, त्याच्यात माणूस किंवा बाई असं काहीच नाही. प्रत्येकाची वृत्ती असे, ज्याची वृत्ती तशी आहे त्याच्यामुळे तो तसं हे होणार. दिस इज माय ओपिनियन सर. त्याच्यासाठी तुम्ही पद्मा मॅडम, काही बायफरकेट नाही होऊ शकत सर. यू आर व्हेरी करेक्ट. अगेन अ व्हेरी, व्हॉट आय कॅन से, आप्ट आन्सर. संसदेमध्ये असे उत्तर दिले गेले पाहिजेत, पार्लमेंट मध्ये, की ज्या उत्तरावर कोणी ऑब्जेक्शनच घेणार नाही. व्हेरी गुड मॅम. आय मीन आय फुल्ली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. इट इज नॉट मेल और फीमेल, इट इज द टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी. हर किसी को लगता है कि मैं जो खर्चा कर रहा हूं उसके बदले में मुझे अच्छी चीजें मिले, ज्यादा मिले. पायल मैम वाज गोइंग टू से समथिंग. पायल मैम, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, योर टेक. No, 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 I was not saying anything. No. वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, वेरी गुड. एनीवे, माय पॉइंट इज दैट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी के ऊपर टीका या क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूँ. ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि औरतों का प्रमाण ज्यादा था एज ए कंप्लेनेंट. फिर हमने पूछा, माँ जी बहन जी क्या कारण? उसका हस्बैंड धीरे से मेरे कान में आके बोलता, आप क्या बताओ बोले. Sir, और my जो answer बताया, was related to my own experience, sir. Please, feminine gender, don't take it as साहब, okay? डॉक्टर साहब ये रिकॉर्डिंग घर पे भेजा जाएगा. Sir, ये फिर आपको, मैं यो आरजे नावेद कभी कभी प्रैंक्स करता है ऐसा कि हस्बैंड को वाइफ के बारे में बुरा बताता है, वाइफ को हस्बैंड के बारे में बुरा बताता है, और वो दोनों ऐसे चालू रहते हैं. फिर धीरे से वो वाइफ को हस्बैंड को ऑनलाइन ले लेता है कॉन्फ्रेंस पे. फिर उसका पूरा पूरा बदल जाता है. अरे तुम हो क्या अभी ऑनलाइन? तो डॉक्टर रविंद्र इंग्लिश साहब के घर पे ये पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, शिखा मैम.
ये बोल रहे कि इनका खुद का एक्सपीरियंस है बट ऑन अ सीरियस नोट लालच, स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये जो षड्रिपु है ना, षड्रिपु बोला जाता है इनको, ये इंसान की फितरत है, हर किसी में होता है, मेरे में भी है। हर कोई स्वार्थी होता है, हर कोई लालची होता है, बट अगर आप इन बातों को कंट्रोल नहीं करोगे तो यू आर वेरी इजी टारगेट। फिर हल्दीराम जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बड़ा ऐड दो कि हल्दीराम ने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया, तब जाके ये बंद हुआ। अब इधर है डॉक्टर साहब, ये शायद आपके काम की चीज है। इधर वाला जो फ्रॉड है ना, ये स्लाइड देख रहे हो आप, दूसरा वाला, इसमें कुछ शराब की बोतलें हैं और उसमें लिखा है कि कॉल मी। अब कोविड के दौरान जब हर चीज बंद थी, दुकान बंद, मॉल बंद, शॉपिंग बंद, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू में रियायत दी गई थी। 2 or 3 hours people can go, come out and buy their essentials and again went inside the home. आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे भी होंगे कि सब्जी के दुकान के आगे वो औरतें या मर्द एकदम आराम, एकदम ईमानदारी से खड़े, जो सर्कल दिया है उसके अंदर, और शराब के दुकान के सामने। डॉक्टर साहब, काय का सोशल डिस्टेंसिंग, काय का लॉकडाउन, काय का इन्फेक्शन, हमने तो यस एक सर, दूसरे के आंग पे चढ़ के भी शराब की बोतलें लेने वाले लोगों के वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे हैं। सर Yes or no? एग्री सर, एग्री। 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइन, वो दूध के दुकान के सामने 5 औरतें ईमानदारी से खड़ी है, यस और सर, शराब के दुकान के सामने मर्दों की 4 किलोमीटर की लंबी लाइन, क्योंकि जी 2 घंटे में। और फिर सोशल मीडिया पे चलता भी था, अरे यार मैंने तो महीने का स्टॉक ले लिया कर्फ्यू में। मैं यानी उसको ऐसा लगता था वो चांद पे चला गया, उसका पूरा महीने का स्टॉक मिल गया उसको। डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? यस सर, इट्स ट्रू सर। So many my patients have liver cirrhosis in those days, sir, due to heavy drinking, sir. एग्जैक्टली लेकिन उसमें जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, वो फेक नंबर होता है। आपको लगता है कि यार सोशल डिस्टेंसिंग है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, मैं जाऊंगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, मर जाऊंगा। लेकिन जिस चीज के लिए आप जा रहे, चलो मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मेरे को शराब चाहिए। अब ऐसे लोगों को अगर घर पे शराब मिल रही तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? दीज आर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स द क्रिमिनल्स आर यूजिंग। बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, मैंने खुद बहुत सारे क्राइम रजिस्टर किए, फिर आरोपी को पकड़ा भी है, फिर उनको थोड़ा सा अपने ढंग से आई हैव गिवन देम द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन, कभी कभी देना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी ये आईटी एक्ट के सेक्शंस है, ये तो लॉ के स्टूडेंट्स है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर कॉग्निजेबल, बेलेबल, सम आर नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय जेएमएफसी, सम आर ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। नागपुर का जो साइबर पुलिस स्टेशन का मैं इंचार्ज था, बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े जुडिशियल ऑफिसर के साथ साइबर क्राइम हो गया। बहुत बड़े हाईकोर्ट जस्टिस थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। माय लॉर्ड के किसी रिलेटिव के साथ साइबर क्राइम हो गया। वो हमारे पास आए, उन्होंने हमको बताया नहीं कि वो हाईकोर्ट जज के क्लोज रिलेटिव है। अब हमारी आदत है कि हर काम को थोड़ा सा सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं। हमने सीरियसली लिया, उनका कुछ लाख, 1-2 लाख रुपए गया था, वो उनको वापस दिलवाया। आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी हैप्पीली एंड प्राउडली, ड्यूरिंग माय टेन्योर व्हेन आई वाज इन चार्ज ऑफ साइबर पुलिस इन नागपुर, ड्यूरिंग दो 10 to 12 months, we have returned, please mark my words, we have returned property worth 2.5 crores within 1 year, which the people have lost only because of their own mistakes. 99% of the cyber crime happens only if you commit some mistake, otherwise it won't happen. अब लोग जो अपनी गलती से ओटीपी दे दिया, पिन नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, सीवीवी दे दिया, पैसा चला गया, रोते रोते थाने में आए, बोलते सर मेरा पैसा गया, मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा थाने में, वो हस्बैंड बोलता है इसने मेरे को पूछे बगैर पैसा ट्रांसफर कर दिया। मैं बोलो यार थोड़ा, और झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा मिटाना इतना आसान नहीं होता है। आप में से किसी को वो अगर एक्सपीरियंस आया होगा, ना हस्बैंड मानता है ना वाइफ मानती है, दोनों बोलते कि तू तू, और कभी कभी पुलिस के सामने झगड़ते, तो पुलिस को विटनेस बन के हाथ में बीच में आना, यानी
नागपुर में बहुत सारे मर्डर्स होते हैं और उसमें बहुत सारे मर्डर जो बीच में आता है उसका हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े में अपन तो थोड़ा सोच समझ के पड़ते भाई, बड़ा डेंजरस होता है। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तो सम उनका हाईकोर्ट जस्टिस सर का पैसा जैसे वापस गया, उन्होंने मुझे फोन किया कि चाय पीने आ जा। अब हाईकोर्ट जज चाय पीने के लिए बुला रहे, आई वॉज ओवरवेल्ड विद जॉय। अदरवाइज हाईकोर्ट जज का प्रोटोकॉल होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। हम गए, उन्होंने मेरे साथ, मेरे सीनियर अफसर भी थे, हम गए, उन्होंने हमको चाय पिलाई। हालांकि वो मुझे पहले से जानते थे, पहले भी एक दो केसेस में उन्होंने शायद हम उनको अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा। उन्होंने चाय पिला के मुझे पूछा कि इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स यू कैन टेल मी। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। मैंने बोला सर हमारा साइबर पुलिस स्टेशन ओपन हो गया, बट एज पर IT एक्ट केसेस शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट and we have opened a cyber police station but we do not have a designated court. उन्होंने इमीडिएटली पीडीएस सर को मेरे सामने फोन किया, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को, वो बोला कि देयर आर प्रोविजंस इन सीआरपीसी, यू अपॉइंट अ जज एंड स्टार्ट फंक्शनिंग विद इन 15 days एंड रिपोर्ट कंप्लायंस। नागपुर का साइबर पुलिस स्टेशन का पहला इंचार्ज भी मैं था, और नागपुर के साइबर डेसिग्नेटेड कोर्ट को लाने में भी हमारा छोटा सा रोल रहा है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि इसमें आगे लिखा है कन्विक्शन अप टू 5 years 10 lakh, सब्सिक्वेंट 7 years 10 lakh, 3 years 5 years, ये सब दिया है। लॉ के स्टूडेंट को ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, यू कैन गो थ्रू द सेक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट। नाउ मैं आई विल सम अप जनरल टिप्स टू कीप यू सेफ। Always keep your system device, desktop, laptop, mobile updated with latest patches. Protect the system devices through security software such as antivirus with latest version. Always download software or applications from known trusted source only. Never use pirated software on your system devices. Ensure all devices accounts are protected by a strong PIN or passcode. Never share your PIN or password with anyone. Do not share your net banking password, one-time OTP, ATM or phone banking PIN, CVV number, etc. with any person. Always change the default admin password on your Wi-Fi router to a strong password known to you. Next. विजिट। अगर इतना सब करने के बाद जिन जिन लोगों ने मेरी बातें आज आपको सुनी, कैसे लगी मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब, आई होप यू हैव एंजॉयड, आई होप यू फाइंड दिस, आई होप इट वाज यूजर फ्रेंडली। क्योंकि मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आया और PhD स्कॉलर को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया। मैं आपके साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने आया, जिसमें कि आप स्टडी करते करते अपने आप को सेफ रखो। अगर अपने आप को सेफ नहीं रखोगे तो भाई मुश्किल में आओगे। तो इतना सब करने के बाद भी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करना होता है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को आप इमीडिएटली जाइए, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, आप टेलीफोनिकली कंप्लेंट कर सकते हैं, आप 13 की लेटेस्ट एडवाइजरीज हमेशा पढ़िए, ये सब वेबसाइट के मैंने दिए हैं। और ये हेल्प डेस्क नंबर है 1800114949, कभी भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अशोक बागुल को तो कभी भी आप फोन कर सकते हो। मेरा नंबर शिखा मैम के पास है, पद्मा मैम के पास है, पायल मैम के भी पास है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी को मेरी जरूरत कभी पड़े एज ए पुलिस ऑफिसर, बट एज ए फ्रेंड यू कैन ऑलवेज बी इन टच। अगर आपको लगता है कि पुलिस से दोस्ती खतरे से खाली नहीं होती है, कोई खतरे से खाली नहीं होती भाई, हम भी इंसान है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म एंड एवरी पुलिसमैन इज अ ह्यूमन बीइंग विद यूनिफॉर्म। तो हम भी इंसान है। ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान वर्दी के बगैर पुलिस वाला होता है, और हर पुलिस वाला वर्दी के साथ इंसान होता है। यस सर। इसको भी इंसान समझो। जो लोग अभी मेरी बातें गुस्से से सुन रहे होंगे, मुझे चेहरे तो नहीं दिखे, 2-3 लोग ही दिखे। जिनको जब मैं बुलाया तब गुस्सा आया होगा जिनके चेहरे पे, उनको मेरा विनम्र प्रणाम। उनको मैं बोलना चाहता हूँ भाई, पुलिस को आप अपना दोस्त समझिए, क्योंकि जब आप पुलिस को दोस्त समझेंगे तो पुलिस वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक इट वाज लास्ट वन। नेक्स्ट,
Next. Okay, thank you so much. I hope you all must have enjoyed it. I hope you all must have found it user friendly. I don't know, but I am happy to know your feedback. आप अभी इमीडिएटली डाल सकते हो चैट बॉक्स में कि आपको ये प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं आपको पीएचडी के हिसाब से यानी थीसिस कंप्लीट करने के हिसाब से ये जो आज का एड्रेस है कितना आई डोंट नो कितना सिग्निफिकेंट है, बट बेसिकली ये आपकी जान और माल की रक्षा के लिए ये मैं आपसे बातें किया हूँ, क्योंकि मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ साइबर क्राइम के विक्टिम कौन होते हैं। अभी तक मैं साइबर पुलिस मैं जहाँ पे गया ना वहां पे क्राइम को कंट्रोल किया, साइबर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाया। रेशन दुकान में जैसी लाइन होती वैसी लाइन कंप्लेंट्स की मेरे थाने में होती थी। मुझे बड़ा दुख होता था, दर्द होता था, शर्म आती थी अपने आप के ऊपर कि क्यों मैं इन लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि हमने रिलीफ दिया, 2.5 करोड़ रुपए वापस किए, 300-400 मोबाइल। अभी आप मोबाइल सोचिए कि मोबाइल के बगैर आपका लाइफ कैसे होगा। आपका मोबाइल अगर गुम हो गया तो ऐसा लगता है कि कोई बॉडी का पार्ट कहीं भूल के आ गए क्या। हमने मोबाइल लॉस्ट मोबाइल भी दिए करीब 400-500, बहुत हमने मेहनत किया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट the best way is to make people aware, and that was the basic intention of my interaction with you all people. I hope कि apart from PhD scholar के साइकी में से बाहर आ जाओ थोड़ा। PhD तो आप करोगे ही करोगे। There are wonderful people like Payal ma'am, Shika ma'am, Padma ma'am, Girish ji and all the wonderful people. She is having a wonderful team. I know. मैं PGTD का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आप PhD जरूर करोगे, बट आप अगर साइबर क्राइम से सेफ रहोगे ना भाई और बहनों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज के वेबिनार का मकसद पूरा हो गया ऐसा मुझे लगेगा। तो आप चैट बॉक्स में डालिए, पायल मैम को, शिखा मैम को फीडबैक दीजिए कि अगर कुछ गलत लगा तो क्या गलत लगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्राइंग टू इंप्रूव माई सेल्फ। और अगर अच्छा लगा, आई वांट दिस वेबिनार, दिस एड्रेस टू बी द मोस्ट मेमोरेबल, because till now, as I told you, scientists, doctors, engineers, lawyers, HODs, Senate members, vice chancellors, police officers, IS officers, media men, business people, MLAs, MP, minister, principal district judges, high court judges, Supreme Court judges. Underline, honorable Supreme Court judges are victim to the cyber crime. तो भाई हम किस खेत की मूली है, हम किस खेत की मूली है। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ पीएचडी स्कॉलर को गाइड करना तो था ही, अगर मैं कर पाया होऊंगा तो। मेरा मकसद ये था कि आप सब लोग साइबर क्राइम से सेफ रहो, अपना नॉलेज, अपना अवेयरनेस, और बहुत सारी ऐसे कितने इंसिडेंट्स, ऐसी कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे एग्जांपल्स है कि आप सुनोगे तो हंसोगे भी और बड़ा। तो आई होप दिस वाज इंटरैक्टिव सेशन। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था। मुझे 2 ही नाम पता चले अभी तक, बाकी लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। नाउ if I am done with it, then we can start for question answer sessions with the permission of Payal ma'am, Shika ma'am and all the people. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, this is Netra. With the kind permission of the madam, can I ask a question? Yes, Netra, go ahead. Yes, ma'am. Sir, very good evening. Sir, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था सर। बट सर, कुछ हम आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ लाइव एग्जांपल सुनना चाहेंगे, ताकि हमें बहुत कम मौका मिलता है ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज को सुनने का। तो प्लीज अगर आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स या लाइव केसेस हमें बताएंगे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो बहुत हमें फायदा होगा उसका। मैं साइबर पुलिस स्टेशन में था। एक वेरी ब्यूटीफुल lady came to police station along with her husband. She was aged about 45-50 years. They both were fighting. I don't know why, because इंग्लिश साहब will agree to me कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि आज कुछ कारण नहीं, इसलिए मैं तेरे से झगड़ लिया। इंग्लिश साहब, मैं कभी कभी पूछता हूँ मेरी बीवी को कि क्यों झगड़ रही, मेरी क्या गलती हो गई। बोलती तू हमेशा गलती करता है तब झगड़ती हूँ, आज तूने कुछ गलती नहीं की इसके लिए झगड़ लिया। They were fighting
inside a police station. I asked them what happened. The lady was furious with her husband, and husband was almost trying to beat her inside police station. I asked them what happened. She said, "Don't poke your nose. Get outside." मैं बोला मैडम यू आर इनसाइड ए पुलिस स्टेशन. आप पुलिस स्टेशन में से थानेदार को हकलोगी क्या बाहर? इतनी बड़ी जाति करोगी क्या? ये नेत्रा मैम, दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी. तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ. द लेडी, शी वाज अ डॉक्टर. अभी आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हो. द लेडी वाज डॉक्टर. ये मैडम बहुत हंस रही है. व्हाट इज योर गुड नेम मैम? योरसेल्फ. द लेडी विथ दिस थिंग. योर गुड नेम प्लीज. सॉरी, सर पूनम इंगोले. अनम्यूट करके बोलिए. सर पूनम इंगोले. पूनम मैम, ये शादी के बाद में जो जो होता है ना, वो आई कैन नॉट आस्क यू वेदर यू आर मैरिड और नॉट, बट शादी के बाद वाली बातें सुन के शादी से पहले ऐसा लगता है कि यार इतना अच्छा होता है कि होना चाहिए शादी. अब शादी होने के बाद पता चलता है डॉक्टर साहब यार शादी इतनी अच्छी बात भी नहीं, बड़ी डेंजरस बात होती है. यस और नो डॉक्टर जी, रविंद्र जी? तो ये झगड़ा कर रहे थे थाने में झगड़ा कर रहे थे. आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड. हस्बैंड वाज वेरी फ्यूरियस अबाउट टू बीट द लेडी बिफोर पुलिस. वो इंटरसेप्टेड. हमारी लेडीज पुलिस ने वो औरत को बाजू में किया, और औरतें जब चिढ़ जाती तब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है. आई डोंट नो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस. मैंने उसके मर्द को बोला यार थोड़ा बैठ, अभी इनफ इज इनफ, व्हाट हैपेंड यू टेल. उसने बोला सर इसने 20 दिन में मेरा 45 लाख रुपया किसी के अकाउंट में डाल दिया. 20 days 45 लाख रुपीज. शी वॉज अ डॉक्टर. उसको फेसबुक से किसी से दोस्ती हो गई, अननोन नंबर था. दोस्ती के बाद थोड़ा और परिचय हो गया, परिचय और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, ज्यादा बढ़ गया, कुछ इंटीमेट बातें होने लगी. दे एक्सचेंज सम ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स. इट वाज नॉट ऑब्जेक्शनेबल फॉर बोथ ऑफ देम, ऑब्जेक्शनेबल फॉर अदर्स. अभी तो हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर का सेक्शन भी निकाल दिया है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो केसेस पहले पुलिस करती थी, अभी मोरल पुलिसिंग नहीं करना है, लीगल एंड प्रोसीजरली करेक्ट पुलिसिंग करना है. लेकिन समाज में नैतिकता के ठेकेदार बहुत लोग बैठे, जो अपने आप को समाज के नैतिकता के ठेकेदार मानते. हम उनको प्रणाम करते, हम उनकी इज्जत करते. हस्बैंड बोल रहा था कि साहब इसने मेरे को मेरे अकाउंट में से 45 लाख रुपए डाल दिया. मैंने मैडम को पूछा मैडम क्या है सही है? बोली तुमसे तो मेरे को बात ही नहीं करनी है. पुलिस वाले तो एकदम ही यूजलेस होते हैं. मैं तो थाने में इसलिए आई क्योंकि मेरा 45 लाख रुपए गया, हस्बैंड ने मेरे को गाली दिया, मारा, इसका कंप्लेंट करने आई. हस्बैंड बोलता मेरा 45 लाख रुपए देके मेरा कंप्लेंट करने जा रही. देखो ये मैं आपको बड़े अच्छे शब्दों में बता रहा हूँ नेत्रा मैम. ये वाक्य जब थाने में हुआ ना, तब आप हिंदी मूवीज में भी देखते हैं ऐसे ऐसे सीन कभी पुलिस स्टेशन में होते. ये वांटेड, ये दबंग, ये सिंघम, ये जो ड्रामेटाइज वर्जन है ना, इससे बहुत भयानक होता है रियल लाइफ पुलिसिंग. मुझे भी लोग कभी कभी सिंघम बोल देते हैं, आई डोंट नो. मैंने भी वो मूवी देखी है. वो एक मारता है फाइट और 10 लोगों को उड़ाता है. मैंने तो आज तक किसी को मारा तो एक भी नहीं उड़ा, मेरे हाथ को इंजरी हो गया. बट फिर भी हम पैसा देके देखते हैं. ये 200-500 रुपए कितना टिकट होता है भाई रजत? आजकल मल्टीप्लेक्स में जाते हैं बच्चे. हम तो थर्ड क्लास में देख के ही बड़े हुए, क्योंकि बालकनी का टिकट नहीं परवड़ता था. डॉक्टर इंग्लिश साहब, बालकनी के ये साहब कौन है दूसरे मेरे जैसे जिनके बाल थोड़े कम दिख रहे हैं? सर योर गुड नेम प्लीज. Myself Dilip Parida, sir. दिलीप जी, एम आई राइट और Yes, रॉन्ग? sir. Yes, sir, you are very much right, sir. थर्ड क्लास, बालकनी के एक टिकट में थर्ड क्लास की 3 मूवीज हो जाती थी. तो वैसे मूवीज Yes, sir. में जो Yes, आप sir. देखते हैं That ना, is उससे भी true, रियल sir. लाइफ पुलिसिंग बहुत डेंजरस होता है. कितनी बार तो हम मरते मरते बचे. इधर हस्बैंड के वाइफ के झगड़े के बीच में आके भी जान को खतरा ही था, बट फॉर्चुनेटली पुलिस स्टेशन में थे. मैडम को पूछा, मैडम बोली कि मैं तो कंप्लेंट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन इसने मुझे गाली दिया, इसके लिए मैं आई, और बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपका कंप्लेंट. अब मुझे बड़ा गुस्सा आया. एक तो उसको पूछा, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसका रिक्वेस्ट आया, पुलिस को पूछ के उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया.
पुलिस को पूछ के दोस्ती नहीं की, पुलिस को पूछ के प्यार नहीं किया, पुलिस को पूछ के कुछ भी नहीं किया, खुद पैसा दिया और थाने में आके किसको गाली दे रही। मुझे लगा ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जाती हो रही है। मेरा भी गुस्सा थोड़ा सातवें आसमान पे। अब क्या करे, औरतों के साथ तो ज्यादा मतलब वी हाउ टू रिस्पेक्ट देम एंड दे आर रियली रिस्पेक्टेबल। इस केस में वो औरत मैडम जो गई, वो मुझे बोलते हुए जो गई ना, मेरे दिल को लग गया कि तुम यूजलेस हो, तुम कुछ करोगे नहीं। मैंने बोला यार ये बातें बीवी के मुंह से सुनने की आदत हो गई है। हालांकि मैंने बहुत कुछ किया उसके लिए भी, बट दूसरे के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने आई टू गेट अ चैलेंज। 3 दिन और 3 रातें हम थाने से गए नहीं। हमने वो जो जहां से एटीएम से पैसा विड्रॉ होता है ना, वो क्लिपिंग्स देखे। वो क्लिपिंग, मेरा एक कांस्टेबल था अजय यादव करके, बहुत बहुत अच्छा लड़का, अजय यादव, रीता, मेरे बहुत अच्छे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत डेडिकेटेड थे। 3 दिन वो लड़का घर पे नहीं गया, खाना नहीं खाया, सोया भी नहीं सही ढंग से, थाने में ही सोता था। हमको एक क्लिपिंग मिला। बेस्ड अपॉन दैट क्लिपिंग, नेत्रा मैम के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। वी ट्रेवल्ड ऑल द वेल टू दिल्ली। वी हैव अरेस्टेड एन इंटरनेशनल गैंग ऑफ नाइजेरियंस। और जब हम उनको अरेस्ट करने गए, डॉक्टर इंगड़े साहब, दिलीप जी, रजत, नाइजेरियन कैसे होते? या जी, 6 सवा 6 फुट लंबे, चौड़े, काले एकदम, और उनसे भी ज्यादा डेंजर उनकी औरतें थी। दिल्ली में एक एरिया है जहाँ पे ये लोग इलीगली रहते हैं, उनका पासपोर्ट वीजा कोई देखता नहीं। पासपोर्ट, आई वॉज पासपोर्ट ऑफिसर, मैं पासपोर्ट में कुछ लोगों को कभी कभी हेल्प करता हूँ। मैंने जो एसओपी बनाया पासपोर्ट का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो अपने देश का सबसे बेस्ट एसओपी था। और उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के 3 दिन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के 3 दिन के भीतर पासपोर्ट लोगों को घर पे आ गया। उस केस में ऑनरेबल सीएम साहब ने हमको फेलिसिटेट भी किया था। उन लोगों के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। जब हम उनको अरेस्ट करने गए, नेत्रा मैम, उनकी वो औरतें आ गई, WWF वाली जैसी औरतें आ गई। एक तो इंग्लिश उनको अच्छी तरह समझता नहीं था, नाइजीरियन हमको समझता नहीं था। वो नाइजीरिया में हमको क्या क्या गालियां दे रही थी, हम समझने के बाहर था। अब वो औरतें इतनी डेंजर थी कि उन्होंने हमको पकड़ा, ऐसा फेंक दिया। वो आरोपी थे 5, पुलिस वाले थे 4। अब एक पुलिस वाला एक नाइजीरियन को नहीं पकड़ सकता, और ये उनकी औरतें आ गई हमारे आंग पे। अब वो उनका हम क्या मॉलेस्टेशन करें, उन्होंने हमारा मॉलेस्टेशन कर डाला। क्या करे? अब किसी ढंग से उन औरतों से जान बचाई। 4 पुलिस वालों ने 5 नाइजीरियंस को पकड़ा और उनको 5 को लाके अरेस्ट किया। और जब वो 45 लाख रुपीज में से 22 लाख रुपीज हमने उस औरत के वापस किए, तब वो औरत, नेत्रा मैम, नेत्रा मैम, यस सर, उसके नेत्र उतरे, उसके नेत्रामधून पाणी येत होते तिच्या नेत्रातून, तिच्या नेत्रातून पाणी येत होतं। नेत्रा मॅडम, मराठी कळतं का आपल्याला? मला कळते, आता माझ्या नेत्रातूनच पाणी येते, मला कंजंक्टिव्हायटिस झालंय. इसके लिए जब बोलते हैं कि उसकी आंखों में देख, तो आप जैसे लोग की आंखों में देखना खतरे से खाली नहीं है। Yes, sir. at least for this period, sorry, extremely sorry, I hope you don't mind. It's okay, sir. मैं ये आपको एक इंसिडेंट बताया, वो औरत आते आई, रोई मेरे पास आके, लिटरली वो, अब वो बताना ठीक नहीं लगता। वो बोली सर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत गलत बातें बोल दी। मैं बोला माँ जी, बहन जी, आपकी कोई गलती नहीं है। शायद आपके दिल में दिमाग में पुलिस का इमेज ऐसा होगा, उसके ऊपर बेस्ट आपने मेरे बारे में ओपिनियन बनाया होगा। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस दिया। बाद में उन लोगों को हमने अरेस्ट किया। अभी बाकी पैसा नाइजीरिया में चला गया है, उसके लिए एमलेट बोलते हैं, एमलेट, दैट इज लाइक एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन 2 नेशंस। अब वो हमारा उनके साथ है नहीं है, वो सब मैंने होम मिनिस्ट्री में भेजा है वो प्रपोजल। इट टेक्स सम इयर्स। ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल माफिया, ये लोग, ये दे आर वेरी टेक्नो सेवी। नाइजीरिया बहुत सारी अच्छी बातों के लिए शायद जाना जाता होगा, बट ये 2 चीजों के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम,
जैसे हमारा जामतारा, एक बिहार में एक एरिया है जामतारा, बहुत इनफेमस है, वैसा ही नाइजीरिया देश भी, माफ करना, इसके लिए इनफेमस है। ये एक केस था और ऐसे बहुत सारे केसेस है। एक केस में तो पायल मैम है, शिखा मैम है, पद्मा मैम है, वी रिस्पेक्ट ऑल दीज वंडरफुल लेडीज। कोविड के दौरान जब स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, से 25 कंप्लेंट मेरे पास आई, एटलीस्ट 25 विद इन स्पैन ऑफ 6 months, वेर वेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कैपेबल, loving and caring professors, teachers, lady teachers were, उनके ऑब्सीन पिक्स और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, क्योंकि ऑनलाइन सब था। लिंक भेज, आज आपने मुझे लिंक भेजा, मैंने लिंक क्लिक किया और आपसे बात कर रहा हूँ। कोविड में तो यही चलता था, स्कूल में कॉलेजेस में लिंक भेज के बच्चे ज्वाइन करते थे, उसमें से किसी ने कोई अश्लील वीडियो डाल दिया, कोई अश्लील पिक डाल दिया। यहाँ पे तो मैडम का ही नेकेड बॉडी, उसके ऊपर मैडम का फोटो। शी वॉज वेरी, बहुत अच्छे घर की औरत थी, और रोते रोते हमारे पास आई, बोले सर मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं बोला बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करते। उसके हस्बैंड थे, उसके इन लॉज थे। सबसे पहले वो बोलती कि पहले ये पिक्चर डिलीट करो, हमने वो डिलीट किया किसी ढंग से, बहुत यूट्यूब को पत्रव्यवहार किया, मैंने खुद बात किया, जो जो करना है किया। शी वॉज हैप्पी, शी सेड थैंक यू सर। नेक्स्ट डे शी केम विथ हर हस्बैंड ओनली टू थैंक मी, कि कम से कम मेरा पिक तो। आप सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, आप में से किसी बैठे हुए व्यक्ति का अगर इस टाइप का पिक्चर या वीडियो वायरल हो जाए, कैसा लगेगा। 8 दिन बाद फिर से आई, बोले सर अब तो मैं मर ही जाऊंगी, फिर से मेरा वैसा ही हुआ। अब उनको हमने काउंसलिंग किया, मैंने उनको बोला कि मैडम प्लीज गिव अस सम टाइम, वी विल ट्राई एंड फाइंड अ कल्प्रिट। हमने उसको पकड़ा, वो कौन था, उसको पकड़ा। मैंने सोचा था कि इसको तो पकड़ने के बाद जो अपने ऐसा कर रहा है वो ठीक नहीं है, मैंने सोचा था। उसको पकड़ा, वो 13 साल का बच्चा था, स्टूडेंट था मैडम का, 13 years बॉय। वो आके मुझे क्या बोला कि सर क्यों बुलाया मुझे। मैं बोला बेटा तूने क्या किया। बोले हाँ किया। बोले क्यों किया। मैडम को प्यार करता हूं। सी, डोंट टेक इट लाइटली, इन्फेचुएशन। ये जो उम्र होती है बच्चों की, 12, 13, 14, 15, 16 साल, ये उम्र में ऐसी बातें बहुत होती है। मेरा भारत महान है, बट दुनिया में हर जगह ऐसी चीजें होती रहती। 13 साल के बच्चे को मैंने बोला कि ऐसा क्यों किया। बोलता है तुम बीच में आने वाले कौन होते हो, मैं मैडम को प्यार करता हूँ। वो बच्चे के मम्मी डैडी, मैडम, उसके हस्बैंड वाइफ सब बैठे हुए उसके सामने बोल रहे हो, 13 साल का बच्चा। Sorry फिर to मैंने interrupt सोच के you, रखा sir. था कि इसको अब क्या 13 साल के बच्चों को क्या कुछ करे। उसको मैंने एक सवाल पूछा, बेटा अपनी मम्मी से प्यार करते हो। बोलता है बोला भेट बहुत करता हूँ। उसको बोला बेटा मम्मी का अगर ऐसा पिक कोई वायरल कर दे तो। वो बच्चा रोने लग गया, वो दीवार पे सर पटकने लगा, सर मैं सुसाइड कर लेता हूँ। बोले अभी आप बताइए, पहले सुसाइड के किसको बचेगी पुलिस। वो मैडम जिनका पिक्चर वायरल हो गया था, अब सुसाइड से किसको बचाना है। आई मीन सी, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अब जो क्रिमिनल है उसको सुसाइड से बचाना है, वो 13 साल का जुवेनाइल बच्चा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। पुलिसिंग को, पुलिस में कभी कभी काउंसलिंग भी करना पड़ता है, कभी कभी कुछ लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, कभी कभी हाथ उठाना भी पड़ता है। तो ऑल दिस वंडरफुल पुलिसिंग इज, आई मीन आई एंजॉय इट, आई एंजॉय इट। नेक्स्ट। So, We will extremely take sorry to last interrupt question, you. sir, because it's already 5:15. We need to end up. So, last question. Ma'am, may I please? Yeah, sure. Go ahead. Ma'am, considering sir's very vast experience, I would like to suggest sir to write a short book or any big article considering all these points today we have discussed. पायल मैडम की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल राइटर। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता। तो यू रिक्वेस्ट हर। Sure. But yeah, Sure. thank you so much. मैं पायल मैम Thank को कहना चाहूंगी, मैम डू यू प्रॉमिस मी, स्वरगंगेच्या काठावरती पीजीटीडीच्या वेबिनार मध्ये
वचन दिले तुम्हाला. सॉरी. ऑन अ सीरियस नोट सर, यू आर राइट. ये हर किसी की लाइफ वैसे इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, वंडरफुल एंड नॉट सो वंडरफुल, बेटर एंड नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस. अब पुलिस वाले की लाइफ ऐसी होती है ना कि कभी कभी जान बची लाखों पाए, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं. तो बट स्टिल आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इंस्ट्रक्शन सजेशंस. कोशिश करूंगा रिटायरमेंट के बाद. मैम हैज, अब ये वीडियो क्लिपिंग जरा प्रिजर्व करना. मैम हैज प्रॉमिस मी. तो बाद में मैं जब अगर इनके पास गया और इन्होंने अगर हाथ खड़े किए तो फिर मैं डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, मैं आपको फोन करूंगा. शिखा मैम, ऑल दीज वंडरफुल पीपल, दिलीप जी, शिखा मैम इज देयर, पद्मा मैम इज देयर, गिरीश जी मे नॉट बी हियर. तो मैं आपको फोन करूंगा फिर. ऑन अ सीरियस नोट आई विल थिंक ऑफ इट. या थैंक यू. If there are any more questions by the scholars, they may email it to sir and sir can answer them. Lastly, I would like to extend my heartfelt gratitude to sir for sparing his valuable time and sharing his real life experiences with us so as to enable us to become digitally literate and stay away from whatever is happening in this cyberspace. We hope that none of us actually fall prey to any of these crimes, but whenever we do, we would know that sir would be there to help us out. Thank you so much, sir, on behalf of the entire postgraduate teaching department of the Nagpur University for taking out time and helping us and enriching us on this beautiful topic. Thank you, sir. आई विल बी हैप्पी टू नो द फीडबैक बेस्ड अपॉन फैक्ट्स. जो भी फीडबैक आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप पायल मैम को बताइए. आई विल बी हैप्पी टू नो सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Be cyber safe. Be cyber safe. Thank you, sir. Okay. Okay, participants, your assignment has been posted. So you know the timeline. Do submit it on time, and tomorrow is holiday, and on Sunday also we don't have classes. So next session will be on Monday, that is 31st of July. Okay. So 31st of July at 2 o'clock, we all will gather again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. सर एक मिनट